Every time you visit a bank branch, you say यार दोबारा आना ही नहीं यहाँ पे because there's so much selling. कार्टून अबाउट दिस कि एक बंदा है, ही टेकिंग अ गन और वो गन चला के बोलता है आई ओनली वांट टू डिपॉजिट माय मनी एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। मेरे को पैसे लेने नहीं है, मेरे को आपको पैसे देने हैं, पर सिर्फ पैसे देने हैं, कुछ और नहीं खरीदना, और कुछ नहीं, और नहीं खरीदना। So it has become like that. Why are then public sector banks doing well? Very good question. 2-3 reasons. Do you feel the entire Indian stock market is overvalued right now? According to you, what happened to PayTM? In many public sector banks, the KYC situation is so bad. If they went down the same route, they would have to shut down the public sector bank tomorrow. और उन्होंने वहाँ नहीं किया, यहाँ कर दिया है. Primarily because PayTM Payments Bank may be small. किसको ये effect होगा? Nobody cares. In the Yes Bank case, RBI ने circular डाला. Please go to court. The court should decide within 15 days what should happen. Court ने बुलाया RBI. आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले कि 15 दिन में मैं करूँगा? So RBI had to issue a clarification, remove that notification, said we request the Supreme Court to please do this as soon as possible. Rakesh himself was also a trader and an investor. He was a person who used to love to go short on the market in the Harshad Mehta time and all that. I think we make a legend out of his long positions, but I think his legendary thing was also cutting positions and going short. He was amazing in that. What about in your opinion, startups going IPO, OYO going IPO? Is it a good trend कि बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं? देखो, हाथ सिर्फ बहती गंगा में धो रहे हैं. Welcome Deepak. This is our third episode with you. So glad to have you back on the Neon Show. And today we are going to discuss a lot of geopolitics because, and I know, finance combined with geopolitics is one of your favorite things, right? According to you, what happened to PayTM? Why RBI? I can't comment on PayTM. So not on PayTM, but just on why is RBI tightening on fintechs in general? So it appears like it's tightening on fintech in general. I agree with that, and I think also that their actions are a little too strong and harsh because they generally give time. They give more time for. So even in the recent cases, they have given people time for. Even in some of the other cases, they've given some time. In many public sector banks, the KYC situation is so bad that if they went down the same route, they would have to shut down the public sector bank tomorrow. पर उन्होंने वहाँ नहीं किया, यहाँ कर दिया है. द आंसर इज प्राइमरली बिकॉज पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी स्मॉल कि किसको ही इफेक्ट होगा, नोबडी केयर्स. वेयरएज द पब्लिक सेक्टर बैंक इज रिलेटिवली बिग, रूरल को इफेक्ट हो जाएगा, फार्मर को इफेक्ट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे. ये वाला जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है. इट शुड बी ए कॉमन काइंड ऑफ अप्रोच टू एवरीथिंग. टाइम दो और इसको ट्रांजिशन कराओ ना. आपको प्रॉब्लम है किसी बैंक से तो किसी और से टेक ओवर कराओ. आप यही करते थे पहले कि कंटिन्यूटी रहेगी. अब आपने कह दिया कि नहीं तो बंद ही हो जाएगा, फास्ट टैग है बंद करो. ये कैसे हुआ? आप किसी और को बोलो कि आप टेक ओवर करो ना, जो प्रोमोटर है उसको निकालो और आप दूसरे को टेक ओवर करा दो. आप उसको बोल दो कि आप खुद ही केवाईसी कर लो, या फिर कि आप ही अकाउंट बंद कर दो जिसके केवाईसी नहीं हुआ है. अब वो बेटर था एज एन अप्रोच. आई डोंट थिंक आई लाइक दिस अप्रोच ऑफ सेइंग कि ये बंद ही कर दो, आप फिनटेक हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप पब्लिक सेक्टर बैंक होते तो शायद हम आपको टाइम दे. ये वाली चीज़ ना ये ठीक नहीं है. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अनदर बैड थिंग दैट RBI इज गोइंग इनटू, विच विल नॉट होल्ड इट गुड इन द लॉन्गर टर्म. इट विल टेक सम एफर्ट बाय एवरीबडी इन्वॉल्व्ड कि थोड़ा सा प्रेशर डालें कि आप सबको एक समान ही ट्रीट करोगे इन टर्म्स ऑफ हाउ द रेगुलेटरी एक्शंस आर, एटलीस्ट इन अ फ्रेमवर्क. ये नहीं कहोगे कि यार ये बंदा टी शर्ट पहनता है, इसको उन्हें काट देते हैं, अच्छा लगता है, सूट नहीं, सूट हमारे साथ क्यों. दैट ईगोइस्टिक वाला बिहेवियर. ये क्या हम फिर से लाइसेंस राज में आ गए? आप कह रहे थे कि लाइसेंस राज हटा दिया गया, अब हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए. अब बोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए. फिनटेक में आप किसी से पेमेंट लो, आपको लाइसेंस चाहिए. किसी का पेमेंट दो, आपको लाइसेंस चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि इस लाइसेंस की वजह से आप फिर किसी को आर्म ट्विस्ट करो और बोलो कि आपका धंधा ही बंद कर देंगे कल. वो पहले हुआ करता था. दैट इज व्हाई वी रिमूव द लाइसेंस राज. नाउ वी आर कमिंग बैक इनटू इट. दैट साउंड्स Why do you think we are coming back? Isn't the government noticing it? It's The a government- derogatory step taking us many years back. गवर्नमेंट्स इन जनरल लाइक लाइसेंसेस क्योंकि पावर होता है उसमें. लाइसेंस में पावर हमेशा, एंड गवर्नमेंट्स लाइक पावर. अब वो जो हटा दिया गया था लाइसेंस राज, वो इट वाज एट गन पॉइंट, राइट. हमारी तो इतनी वाट लगी हुई थी कि यार कुछ तो करो, चल ठीक है हटा देते हैं.
बट इनहेरेंटली द गवर्नमेंट डजंट लाइक इट कि सारे गवर्नमेंट में यार ये मतलब ये ऐसे कैसे कर रहा है काम बिना लाइसेंस के, कब लगा दो। अब कह दिया कि देखो आप सोशल मीडिया पे कुछ बोलोगे उसका भी लाइसेंस चाहिए, वो शायद हो जाएगा एक दिन, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा कोई केस और सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप किसने बोला कि किसी को लाइसेंस चाहिए, फंडामेंटल राइट है, आप इसका लाइसेंस लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव अ राइट टू स्पीच, they can put reasonable restriction, but that reasonable restriction cannot be I need a license to speak. But can fintechs go to Supreme Court Of course against they RBI? Why can't they go? Court, they can go if they want to go. But the fear right now is कि जाएंगे फिर RBI को. But in the end, what do? At some point, somebody has to go to RBI, to Supreme Court. RBI has been told by Supreme Court once. In the Yes Bank case, for instance, Yes Bank case या किसी में था 81 बॉन्ड का कोई तो इशू था, RBI ने एक सर्कुलर डाला कि प्लीज गो टू कोर्ट एंड द कोर्ट शुड डिसाइड विद इन 15 days व्हाट शुड हैपन। कोर्ट ने बुलाया RBI, आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले कि 15 दिन में मैं करूंगा केस, आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे? सुप्रीम कोर्ट। तो RBI had to issue a clarification, remove that notification, said we request the Supreme Court to please do this as soon as possible. Yeah. Now that is the Constitution, that is upholding the Constitution कि देखो there is a Supreme Court, you cannot, not that it's right all the time, but at least there is a decorum of saying कि आप ही भगवान नहीं हो, उसके ऊपर भी एक है. So RBI gives the notification, there is always a higher court. Now, whether you'll win at the higher court or not, we don't know. The answer to that is only find outable if you go to a Supreme Court. Today, there is no... Abhi, Kotak, why did he go to Supreme Court? And he won. He went to Supreme Court because he said, यार मैंने बहुत बात कर लिया आपसे, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात. I think regarding थे? There was a case on his promoter ownership. They said कि आपका 26% क्यों है, आपको या जो भी है आपको कम करना चाहिए 26% तक. And he said, I have this ownership. I'm willing to give away my voting rights. पर मेरे को 40% रखने दो. You know, they said no. You cannot do that. You have to, otherwise हम ये करेंगे. So then they talked. Then he said, I'm going to Supreme Court. And he went. Now, Uday Kotak is Uday Kotak. Yeah. So you have the power of the institution and the man who built a lot of... When he did that, the Supreme Court said in the end, ki dekho, what he's saying is justified. You should not just behave in haste. They told RBI to backtrack. RBI did. And eventually, of course, RBI got its way back in another way. Because in India, institutions have memory. They have ego. Ego also. So, but theek hai. There... Kotak displayed a point where he said the first time a regulated entity went to court and won. Now, in other cases also, RBI may find that some entities, if you push them against a wall, they might come back and say, आप ये नहीं कर सकते हो. Like, it is possible in other regulators also. किसी regulator ने बोला, you cannot speak like this. You cannot speak openly, what are you? You know, or this thing like that. At some level, if this goes to Supreme Court will ask the regulator, आपको किसने कहा कि you can restrict what one person says who is even registered with you or who is not registered with you. You cannot tell people what they can or cannot say unless you say that, okay, you cannot say a lie. वो सब तो ठीक है, पर आप बोलो कि किसी को ये बोल ही नहीं सकता इसके बारे में. Like, I cannot say what is my past performance. यार मैं किसी को बोलूँगा कैसे कि मैं अच्छा आदमी हूँ अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर सकता. बट यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड रीजन वाई. सो द सुप्रीम कोर्ट विल आस्क कि व्हाई डू हैव यू पुट दिस रूल एंड इज दिस नॉट इम्पिंजिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच. देन विल देयर बी अ प्रॉब्लम वेयर द रेगुलेटर कम्स एंड सेज, देखो हमने तो अपने रूल्स पे बोला हुआ है, we don't feel this is a good thing. Supreme Court will say, fine, you don't feel, but I feel, so I will. So they might come back. This is necessarily, I think, this undoing of this license thing will happen only when people are pushed to a corner. And therefore, the regulators also go lax. वो rules तो बड़े बड़े बनाते हैं, पर usually उनका implementation धीरे से होता है. And they only find the hardcore criminals. उसके against आप एक्शन ले लेते हो. तो हार्डकोर क्रिमिनल इतना हार्डकोर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा भी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये कौन है यार, मतलब ये तुम इतना गंद कर फैलाते हो, मैं क्यों आपकी सुनूं.
Versus if you go against a well-established entity, then they have the power to go to court and talk. But this will change. One day the regulators will go after the wrong person, and that wrong person mean they're after an honest person. Yeah. And that honest person will say कि देखो ऐसा नहीं है, we have remedies. This is a natural part of growing up. We give institutions too much power. The institution misuse those power. We take the power back by Supreme Court or something like that. Sometimes the Supreme Court itself thinks it has too much power. And then, like for instance, one High Court judge said कि हमें क्यों why are we charged fee at toll gates? We should be given free access. Like there should be a lane only for like High Court judges. Supreme Court ने बोला तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब तुमको ना फी देना है, जो भी है वो अलग है, बट तुम्हारे लिए सेपरेट लेन, ये तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है. सो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट if Supreme Court says it, then you have to go back to Supreme Court with another bench and say कि देखो उस bench ने गलत किया, आप प्लीज इसको ठीक करो. This is the only way the system evolves. And we are क्या कहते हैं, we are a nascent community. Early हैं हम लोग. ऐसे judgments आने चाहिए. Over time, these judgments will get stronger and stronger and stronger, and will get better. But till that time, हमें suffer करना पड़ेगा. What is happening in banking stocks and banking sector in India? I think the problem with understanding banking stocks is a very complex piece, and usually when the West looks at an emerging market economy, they look at the banks as the barometer for the economy. Economy is doing well, banks will do well. Economy is not doing well, banks will not do well. Banks have been the primary investment vehicles for foreign investors for the longest time. So, for instance, more than 75%, I think, of HDFC Bank is owned by foreign investors. More than 50-60% more than that probably of ICICI Bank is owned by foreign investors. And we say that PayTM is a Chinese company. Yes, so people there don't is know a, that there is HDFC is 75% owned by foreign investors. In fact, to the point where there were FDI limits on what people could own in HDFC Bank, and HDFC Bank should always come close to those limits. So HDFC Bank's ADR in the US used to trade at a premium. What is ADR? ADR is the American Depository Receipt. So जो अमेरिका में equivalent to effectively a share, I think 1 share or 2 shares of it's called HTB, the symbol. That used to trade at a premium to India because India में आप आ नहीं सकते हो तो American share ले लोगे. That created a wave because ICICI also has a ADR, but ICICI does not have the same issues with limits, so that tends to be a little bit closer. So you have a situation right now where the banks have been the barometer of the economy for foreign investors so far, but foreign investors are less relevant to India's investing philosophies or investing growth. While they continue to own, there are two things that are happening. They are less relevant because last month, in January 2024, they have sold roughly 25,000 crores worth of stocks. Just in banking or overall? No, overall. Okay. But you can assume that because they're mostly invested in banking, they've sold a lot in banking. 50% would be banks at least. Yeah, significant percentages. I assume out of that 50%, top 4 banks, HDFC, ICICI, Kotak, and maybe one more, would constitute 80%, like Pareto's principle. Yes, for the most part, but they also have ownerships in IDFC. They have ownerships in some of the smaller banks, like maybe Federal or this thing. They also have ownerships in public sector banks as well, SBI included. The government owns only 50%. The remaining, there's a good chunk that's owned by foreign investors. Now, what has happened is also because of index funds. Because these banks are relatively high in weightage, so 30-40% of the weightage of Nifty is the banks. Yeah. Therefore, any foreign investor looking to invest in index kind of an approach in India is always going to choose 30-40% of that as the banking index. And because they've been so interested, banks have done relatively well compared to the rest of the economy. Now, when they are uninterested, banks are not doing so well. Also that there are headwinds in the banking business itself. So HDFC Bank, for instance, had a merger with HDFC. उसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है.
एंड किसी को समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ तो आ रहा है but nobody knows how long it will take to resolve the situation in general. There are lots of issues. Their net interest margins have compressed quite substantially. Their cost will probably remain high until they figure out how to remove the redundancy with HDFC. There is a lot of there's a lot of culture difference between the two teams. So while they resolve that, the growth ek tarah se they will not be able to grow so much, and they've shown last 2 quarters. And strangely, HDFC is usually very upright and forthright about everything. कि अच्छा प्रॉब्लम है, आप देखो 2-3 क्वार्टर में सॉल्व हो जाएगा. दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स व्हेन यू आर सीइंग कि HDFC बोल रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है. अच्छा, और बट सबको प्रॉब्लम दिख रहा है. हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है. आप ग्रो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो आप 50% ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन आप पिछले साल में आपका HDFC मर्जर नहीं था, अब आपका HDFC मर्जर है. अगर हम ला के देखें तो सिर्फ 5-10% का ग्रोथ है. तो आप में बोलते क्यों नहीं कि 5-10%? फ़ायदा क्या है मैं बोलूँ, क्योंकि मैं तो एक्सेल में 2 चीज़ ऐड करके बोल दूंगा कि देखो नहीं है तुम्हारा ग्रोथ. So it's a very uncharacteristic move for an HDFC bank, and I'm not saying this critically or saying this thing. We have a small position as a disclosure, very very small. So, but and we did a podcast on HDFC Bank a while back. Yeah. In fact, that time we had said कि देखो HDFC Bank में fight है, LIC ठीक है. LIC has a different approach to things. We own a much larger percentage of LIC, so that way situations are different. But the issue with HDFC Bank is about the merger, and that merger dynamics. It's always a big thing कि अब तो बड़े मतलब entities को merge. So why did they merge at all? I think the merger, 20 years people have been discussing कि आप लोगों के पास अलग बैंक और अलग housing finance company क्यों है. And that too, the housing finance company is the parent of the bank. Yeah. Usually the bank creates a housing finance company subsidiary. वो ठीक है, because then you're buying the bank, तो मिल जाता है, subsidiary होगा. But like PNB is there, and PNB Housing Finance is there. This is separate. LIC is there, LIC Housing Finance is there, separate company. LIC is not a bank, but say Canfin Homes is a subsidiary of Canara Bank. Yeah. And so you typically have that as a structure. And the reason for NBFCs to exist has always been regulatory arbitrage. कि आप जो rules बैंक पे लागू होती हैं वो housing finance company में नहीं लागू होती हैं. In certain broad context of the word. So the earlier the rules were much more lax. NPA recognition was different. What is NPA? NPA is non-performing asset. मतलब loan अगर fight हो गया that way, and they were they were both different parameters. They were different parameters. Bank and housing. Well, for example, I think in bank NPA is 2-3% is a high. As in, no, not about percentage, but when. For instance, if you're 90 days past due, that would be a qualification for a bank to say कि देखो you're an NPA. In a housing finance company, it was slightly stretched beyond that. Now also they've given something called ECL, expected credit losses. So their NBFCs are required to recognize कि क्या है, but at least in that context, you are seeing that NBFCs are not necessarily, they're not getting the same regulatory treatment as banks. Over time, though, RBI said कि देखो आपका जो setup है, NBFC अलग और बैंक अलग, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, HDFC was larger than about, I think, other than the top 3 banks, it was larger than everybody else. Yeah. आप इतने बड़े हो जाते हो अगर, then I will regulate you like a bank. Yeah. So I will ask you to keep some capital handy in case कि कोई कुछ करे. Yeah. आपके पास deposits हैं, deposits कोई अगर, I know they're not callable deposits, but in case they are called, or people need to get rid of them, you have an issue with. You don't have a bank. You would have a bank. Not a bank. Well, it's like you're not able to refinance your bonds. फिर क्या करोगे? And that issue के लिए we want you to keep, let's say, 10 or 15% capital against that. You need a slightly higher capital adequacy ratio in case you're a certain size. You have certain loans. So for instance, HDFC as a NBFC could lend to land. It was one of the largest lenders to land. Banks cannot lend to land. Can you simplify it? Like, मतलब आपके पास घर नहीं है, आप बिल्डर वांट्स टू बाय अ लैंड पार्सल 200 करोड़ का, उसके ऊपर वो बाद में पता नहीं कब लेकिन अपार्टमेंट बनाएगा.
वो अगर बैंक के पास जाता है तो वो कहेंगे देखो आप लैंड खरीद रहे हो, आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं है इसको डेवलप करने का, आप बोलो कि अगले 10 साल में कभी तो बनाऊंगा ये चीज़, बैंक कैन नॉट लेंड टू लैंड. Okay. तो वी विल, यू कैन टेक अ पर्सनल लोन बट 200 करोड़ में कहाँ ही मिलेगा आपको पर्सनल लोन, एंड सो वी कैन नॉट लेंड. सो वी विल लेंड अगेंस्ट अ बिल्ट हाउस, बिल्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग, आप जिसका आपका ऑनरशिप है. HDFC could. So HDFC people would go and say कि देखो लैंड खरीदना है, हम खरीदते हैं. Now all that has been transferred to HDFC Bank. So HDFC Bank has that as their this, but they cannot incrementally lend to more land, right? So land खरीदने वाले कहाँ जाएंगे? They probably go to some bunch of other places, either create bonds in the market and so on. वहाँ भी बैंक somehow participates, so there's some kind of quasi lending in a way, but in that sense that HDFC was a ready and available lender, not there. They have to go to now the next biggest, which may be Bajaj Finance or Finance. Not many people have the heft of HDFC, and therefore that business area of HDFC Bank becomes unviable for them to continue. कि lend bank कर नहीं सकते हो. अगर if I have a builder contact me कि मैं land, so what happens also अगर आपने builder को loan लिया land लेने के लिए, when that builder builds an apartment on that, तो आप ही के पास आएगा कि देखो आप इसमें फाइनेंस करो, यू फाइनेंस वन पार्ट, बाकी मेरे कस्टमर से पैसे आते जाएंगे, आपका दोनों हाउसिंग लोन मतलब बिल्डिंग का लोन एंड द लैंड का लोन दोनों साथ में निकल जाएगा, विच इज़ ग्रेट. बट नाउ विदाउट द लैंड they will use the same technology with somebody else, right? They will say कि we will take a loan from Bajaj Finance for land. फिर बजाज फाइनेंस को बोलेंगे यार आप घर भी फाइनेंस कर लो, एंड बजाज फाइनेंस भी आप बैंक को मतलब आप बैंकों को मत ले आओ अभी, बिकॉज अंटिल माई लोन इज क्लियर्ड आई डोंट वांट टू शेयर इट. सो वन थिंग वुड बी दैट वुड बी अ कंसर्न. इन जनरल द NBFC एंड बैंक वाला डिफरेंशियल इज primarily been a regulatory arbiter. Now till Aditya Puri was there and Deepak Parekh was strong, there was a fairly well understood thing कि देखो merge नहीं करेंगे. Even Deepak Parekh said at some point कि देखो we don't want कि बैंक में for instance if I have a deposit of 100 rupees, I have to put 40 rupees to priority sector, I have to put 22 rupees to SLR CRR. तो बेसिकली माई लेंडिंग इज़ कंस्ट्रिक्टेड कि यार मैं घर को मतलब लेंड नहीं कर सकता कि अगर 40% तो 20 रुपया वहाँ लगा लो, 30 रुपया यहाँ लगा लो, फिर मैं कहाँ ही मतलब 50 रुपये ही लेंड कर पाऊँगा अगर डिपॉजिट के 100 रुपये हैं. एंड HDFC was lending to relatively expensive properties also. So they were talking about the 1.5, 2 crores, 4 crores, those kind of apartments as well. So there they would get more freedom कि आप ज़्यादा इसको कर सकते हो. Whereas if it go to HDFC bank level, they'll say कि देखो 100 रुपये डिपॉजिट में ले रहे हो तो 3 some percentage has to go here. Now what has happened is because of this merger, RBI has told them देखो ठीक है merge हो गया, आपको 1-2 साल देते हैं कि आप इसको सॉल्व करो, बट ओवर आफ्टर 2 years आई वॉन्ट स्टिल 40% टू बी ऑफ द होल डिपॉजिट बुक और द लायबिलिटी बुक to be still priority sector, which means that What is priority sector? Priority sector being their RBI has put a bunch of industries. So for instance, houses whose cost is less than 25 lakhs in non-urban, non-metro, less than 50 lakhs in metro, I think. Then there are about 7 sectors: agriculture, SME, some parts of microfinance, most parts of microfinance, but they are to be designated as such. These are all priority sector loans. You have to have 40%. So agar aapne nahi kiya, that money has to be given to NABARD. NABARD gives you 6%. 6 point something. And for our listeners, what is NABARD? NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay. So NABARD कहता कि ठीक है आपने नहीं किया. तो ऐसा होता था कि when banks have a lot of priority sector loans, then they would say कि यार मेरे 40% से ज़्यादा है, आप में से किसी को चाहिए तो दो लो, आप ले लो मेरे से. बंधन बैंक was a microfinance institution, so almost all his loans were microfinance. तो वो आ गया कहता कि यार मेरे पास 80% है, आप ले लो मेरे से 40%, मेरे को तो सिर्फ 40% करना है. तो देयर अदर बैंक्स यूज्ड टू बाई फ्रॉम देम. अब बाई में क्या होता है कि अगर मैं 12% कमा रहा हूँ
तो मैं 8% पे बेचूंगा. सो आई मेक अ वेरी बिग प्रॉफिट ऑन सेलिंग डाउन द MFI loan portfolio. So this was a good business model to have. To Now, give just to your, let's say, your incoming interest to other banks for 4% interest without serving it. so it's complex. What happens is I create the loan. हाँ. आप 12% मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हो या 14% जो भी है आप ले रहे हो. Now when I sell the loan to you, the liability is yours. कल डिफॉल्ट हो गया तो आपका है. लेकिन अगर 8% पे खरीद रहे हो, यूजली आप कहते हो कि यार मेरे को एक काम करो, दो चीज़ कर सकते हो आप. या तो मेरे को सारे लोन्स ऐसे ही बेच दो. इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट असाइनमेंट. डायरेक्ट असाइनमेंट इज आई असाइन टू यू वॉट एवर इंटरेस्ट आई गेट आई गिव टू यू माइनस सर्विसिंग कॉस्ट, एंड यू पे मी अ वन टाइम फी. सो अगर 100 करोड़ का लोन है, लोन बुक है, एंड आई से कि देखो ठीक है मेरे को बेचना है, एंड यू से कि मेरे को खरीदना है, मैं कहता हूँ मेरे को 120 करोड़ दो अब, लेकिन जो इंटरेस्ट आएगा आई विल पे यू. नाउ व्हाट विल हैपन इज आई हैव अ 12% लेट्स से इंटरेस्ट रेट. वो 12% पे मेरे 100 करोड़ पे 12 करोड़ पर ईयर आते रहेंगे. मैं वो 12 करोड़ आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा माइनस मे बी ½ करोड़ फॉर माई 0.5% फॉर माई चार्ज वट एवर. सो यू गेट 11.5 करोड़ एवरी ईयर. आपने 11.5 करोड़ कमाना है ऑन अ 120 करोड़ इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट होगा सिर्फ 100 करोड़ होगा, 120 नहीं आएगा, तो आप 20 करोड़ वहाँ भी गवाओगे. सो योर नेट interest earning that you will make on an XIRR basis will be substantially less than 12%, maybe 10, maybe 9. So that is the concept of saying I will sell you a loan at 9% versus yield is 12. So the yield of the loan is usually lower than because आप desperate हो, आपको priority sector तो लेना ही है. So in that context I create that as a this thing. And the thing about banking is it's such a complex beast because so many moving parts that banks usually make money from everything. आप किसी को पे करते हो तो क्रेडिट कार्ड की फीस से कमा लेते हैं, किसी को आप अब NEFT से तो नहीं कमा सकते. Every fintech startup in India wants to become a bank and RBI is not allowing to do that. Actually for good reason, because I think banks have a very specific ownership criteria. आप किसी बैंक का 10% से ज़्यादा you cannot have external, any person cannot own more than 10%. Now, promoter can own maybe 24. In fact, it's weird. First, you have to own 40%, at least 40%. So you can own 100% of the bank. But then within 5 years, you have to go IPO. और उस 5 years के time frame में there is one rule that says you cannot own more than 40%, and another rule that says you cannot own less than 40%. वो एक 3 साल के बाद आता है और एक 5 साल के बाद आता है. सो फॉर दैट फ्रॉम 2 years you have to have exactly 40%. Then that one rule falls off, तो आप कम कर सकते हो. पर you want to retain it, then you have to get RBI permission. And then RBI will say कि आपको जब तक आप नीचे नहीं करोगे मैं आपको ब्रांच बनाने का परमिशन नहीं दूंगा. So this rule exists, so they have to bring it down. Kotak had an issue. Kotak they said कि आप नहीं कर सकते. Kotak went to court. Kotak ने कहा आप कैसे कर रहे हो, हर एक बैंक का अलग रूल है. तो RBI ने कहा हाँ हर एक बैंक का अलग रूल है, क्योंकि उनको जब लाइसेंस दिया गया था लाइसेंस के रूल्स ही अलग थे. आप ओरिजिनल लाइसेंस के रूल्स ही फॉलो करोगे. देन कोर्ट सेड कि देखो ऐसा तो नहीं है कि आप such a complex world. So you But end it's up important for people to understand it, because everybody is saying buy bank stock, somebody is saying don't buy bank stock. पर चल क्या रहा है बैंक में ये तो पता होना चाहिए. नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है. इनफैक्ट इतना सब हमसे ऐसे नर्ड्स ही देखते हैं सारा कुछ. ऑनेस्टली बैंकिंग बिजनेस. बट कमिंग बैक टू अगेन राइट द मैक्रो क्वेश्चन कि इस समय बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है. यू सेड कि दीज आर द रीजंस. Yeah, there are issues right now. The banking stocks are not in favor at the FI level because they're, I think, exiting a lot of stocks in general. और इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है, द इन्वेस्टर, they are not favoring banks also, and that's why Indian economy, as you said, 40% of it is banks. So not economy, the index. The Indian economy, the bank is a relatively smaller portion of the overall scheme of things. There may be 12% at max, and this is banks plus NBFCs put together is about 12% of economy, but the index is overrepresented. So and why is the reason that index doesn't actually represent the large part of? नहीं, because you have 50 stocks. अब क्या ही करोगे. एक दिन स्टॉक मार्केट का वैल्यू ज़्यादा है बैंक का. फिर तो RBI को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, राइट, द मर्जर, बिकॉज द इंडेक्स वुड बी मोर हेज्ड ऑन HDFC. वे दोनों वैसे ही दोनों इंडेक्स में थे. हाँ, तो आपने मर्ज कर दिया तो इंडेक्स से कोई चेंज नहीं हुआ. So what was 6% and 7%
has become 13%. 13% of the index. That's fine. So now what will happen is because the other stocks have run up, that 13% will become 11%. And slowly कम होता जाएगा. So if you're over indexed on banks, your issue is कि the Nifty will then respond more to how the banks perform. And banks have been having issues. So at one layer, HDFC के issues हैं. HDFC is the biggest stock on this thing. The second bit will be on net interest margins, which are generally coming down. And can you simplify what does that mean? Net interest margin is if I lend at 12%, that means आपने loan लिया मैंने 12%, but it's a weighted average of all my loans. And if I borrow at 8%, मेरा NIM है 4%, तो मैंने net अपने FD rates का average is 8% and lending is at 12, so I make 4%. This is not always true. Usually borrowing rates are much lower because CASA is called current account saving account. Current account में तो 0% interest है, savings account में 4 है. तो अगर आपका deposit mostly CASA में है, your deposit book will get indexed on a weighted average basis कि सिर्फ 50% आपका 8% पे FD है और बाकी 0 या 4% पे. तो यार एवरेज वेट अगर आप वेट कर लो तो 6% आएगा. और इस तरफ में आपने जो लोन दिए होंगे, कुछ हाउसिंग लोन दिए होंगे, और हाउसिंग लोन में आप सिर्फ 8.5% चार्ज करते हो. वेराज आप बाकी लोन्स पे आप 10, 12, 14 जो भी है, तो अगर वेटेड एवरेज लो तो 10% आ जाता है. 4% इज दैट. नाउ 4% निम है. NIM is one way for the bank to earn money. That is the core banking concept की lending, borrowing. But फिर आपकी processing fee हो गई, late payment fee हो गई, credit card fee हो गई, जो भी है वो fees आती हैं. So fees typically form another big component of a banking business. So the more the fee income, more foreign investors love the stock. कि यार इसको इंटरेस्ट रेट से पंगा नहीं है, इसने तो बस पैसे कमाने हैं, जैसे भी होता है इंटरेस्ट रेट वो ही विल अर्न हिज मनी. सो यूलिप बेच दिया, यूलिप के फीस आ गए, वो फीस कमीशंस. सो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स फॉर्म द अर्निंग, कोर अर्निंग ऑफ अ बैंक. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज निम्स आर कोलैप्सिंग बिकॉज आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए थे एंड द रूल्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू बैंक्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कि आप अपने लोन्स को ना एक floating rate loans अगर आप दे रहे हो, तो please link those floating rates to something that's like a 3-month T-bill or something like that, or repo rate or something. तो repo rate जब बढ़ता है, the company increases the loan rates that it passes on to customers. But आपके जो पास में deposits थे वो कम रेट पे आए थे, वो अभी रिप्राइस नहीं हुए क्योंकि लोगों ने पैसे निकाले नहीं है. क्यों नहीं निकालते? क्योंकि अगर आप निकालते हो तो एक फाइन होता है, 0.5% ट्रांजैक्शन फीस लग जाती है. हाँ, and they call it early repayment charge or whatever it is, prepayment. Yes, I remember I went to ICICI Bank recently and I had a very small FD. So they requested me कि सर आपकी 5% पे FD चल रही है, इसको 7% पे कर लो. पर मैंने कहा देना कितना पड़ेगा? कह रहे 0.5% देना पड़ेगा. पर and continuous push, because now the incentive in banking industry, what I'm realizing is at individual level for a branch manager, for agents, for reps, right, who are running 34, is highly linked on how many transactions they do. So every time you visit a bank branch, you say अब दोबारा आना ही नहीं यहाँ पे, because there's so much selling happening. वो अभी वो है ना, वो I think there's a cartoon about this कि आजकल लोग like एक बंदा है जो, the cartoon is like this कि he's taking a gun to a bank और वो गन चला के बोलता है मेरे को I only want to deposit my money and no other products. Don't, that is his threat कि मेरे को पैसे लेने नहीं है, मेरे को आपको पैसे देने हैं, पर सिर्फ पैसे देने हैं, आपसे और कुछ नहीं खरीदना. So it has become like that, but that's the nature. See, I'll tell you what happens. The problem is ब्रांच तो आपने ओपन कर लिया, उस पर अपने ब्रांच मैनेजर रख लिया, उसकी सैलरी है, वो करेगा क्या? आदमी को कैश चाहिए, वो तो ATM जाया जा रहा है, एंड डिपॉजिट बुक करना है वो ऑनलाइन बुक कर रहा है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज हैपनिंग ऑनलाइन. सो द स्टाफ एट दैट इज अ टेलर. आपने कैश मशीन रखा हुआ है, कैश मशीन में काउंटिंग होता है सुबह, काउंटिंग होता है शाम को, वो उसका अलग कॉस्ट है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, फिर मेंटेनेंस है, फिर ये है वो है, आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना है बाहर, आपको ये करना है. सो यू हैव दिस कॉस्ट ऑफ अ ब्रांच. उसको आप निकालोगे कैसे? आप बोलोगे या ब्रांच में हर पर्सन को इंक्लूडिंग द टेलर, आप किसी को भी बोलो कि यार कुछ तो करवाओगे कस्टमर से.
इन्वेस्टमेंट करने उन्हें समझ नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट है क्या और बस करना कराओ। है। अब आरबीआई ने एक्चुअली रोक देना था इसको कि आप इसको इतना मिससेल क्यों करते हो, यू नो व्हाई डू यू मिससेल सो मच, बिकॉज यू विल गो टू अ विडो हु इज 70 इयर्स ओल्ड, आप उसको इंश्योरेंस बेचोगे। अब वो भी बात ठीक नहीं है, पर मैनेजर कहता है यार मेरा तो टारगेट है, मैं क्या करूँ। बट टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब किसी को यू नो इन अ वे आई वुड से दिस इज अकिन टू अ फ्रॉड, कि आपने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देके, एंड बिकॉज 70-year-old पर्सन मोस्टली डज नॉट नीड इंश्योरेंस, आपने बस चिपका दिया कि किसी को बोल दिया फिक्स डिपॉजिट है आप, और जो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आपके बैंक से मिलता है, तो आपने बोल दिया नहीं देखिए फिक्स डिपॉजिट है, बेच दिया। येस बैंक में सिचुएशन ऐसा हुआ था कि कुछ बैंकर्स ने अपने कस्टमर्स को बोला कि देखो ये तो बॉन्ड है बैंक का, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम एज फिक्स डिपॉजिट, पर वो था 81 बॉन्ड। जब येस बैंक में ट्रबल हुआ देन 80 बॉन्ड्स वर रिटन डाउन टू 0, तो ना आपको इंटरेस्ट मिला ना प्रिंसिपल। नाउ पीपल आर लाइक आपने तो मुझे बोला था बॉन्ड है कि फिक्स डिपॉजिट जैसा है। उन्होंने बोला नहीं फिक्स डिपॉजिट तो नहीं था, क्योंकि वहाँ 9% मिल रहा था और फिक्स डिपॉजिट में आपको 7% मिल रहा था, यहाँ ये जो 9 है वो एक्स्ट्रा रिस्क है और रिस्क आ गया, आप क्या करें। तब दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज देन दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द बिगिनिंग। ये येस बैंक में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग जो फाइनेंस इंडस्ट्री में थे वो खुद नहीं समझ रहे थे कि क्यों इतना ऐसा राइट ऑफ हो गया, क्योंकि पहले तो बहुत व्हेन दे सेड कि आपका जीरो हो जाएगा, कैसे होगा जीरो, बॉन्ड है आप जीरो कैसे कर सकते हो। बॉन्ड में लिखा है 81 बॉन्ड है स्पेशल, इट्स नॉट इवन, इट शुड नॉट इवन बी कॉल्ड अ बॉन्ड, इनफैक्ट आरबीआई कॉल्स इट एन 81 इंस्ट्रूमेंट, इट डजंट कॉल इट अ बॉन्ड, बट लेट अस से यू कॉल इट अ बॉन्ड। उस बॉन्ड के प्रोस्पेक्टस में अगर आप पढ़ो तो एक्चुअली साफ साफ लिखा है कि देखो बैंक अगर ट्रबल में है तो हम इस बॉन्ड को जीरो पे ये कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते नहीं हो देन इज इट योर फॉल्ट, इज इट द गाय हु सेल्स यू वाला फॉल्ट। अब लोग, वो बैंकर तो ये कहेगा कि आपको पढ़ना चाहिए था, पर मैं कहता हूँ यार बैंक्स में ना ट्रस्ट होता है एक इनहेरेंट, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से कि देखो अगर कुछ होता है, the person who you're talking to has not got as much information as you. It is information asymmetry, and this information asymmetry should not be exploited. अगर मैं मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता हूँ और किसी को मैं बोलता हूँ कि देखो आ जाओ, मार्केट हमेशा 3 साल ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं पास्ट डेटा देखता हूँ 95% ऊपर ही होता है, पर मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि मैं मैं किसी को गारंटी नहीं दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे पता है कि 5% केसेस में मार्केट नीचे हो जाता है, और अगर मैं कस्टमर को ये ना बोलूँ, इनफैक्ट ये भी ना बोलूँ कि देखो 3 साल में शायद ऊपर चला भी गया, बीच में कहीं आपका 30% नीचे हो सकता है, या 40% हो, 50% हो सकता है, 80, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 100 रुपये डालते हो, एक दिन आप उसको 50 रुपये अगर आप देखोगे अपने ऐप में, तो यू विल फील कि यार मेरा पैसा डूब गया। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप अगर इफ आई डोंट टेल यू दिस देन इट इज़ माई फॉल्ट नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूँ कि आपको दिखना चाहिए था मार्केट को, स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही ऊपर नीचे जाता रहता है, पर आई फील दैट्स अ लिटिल अनफेयर, क्योंकि मेरे पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन आपको बेचने से पहले आई शुड टेल यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। Coming again back to the macro question, right? So banking sector, as you said, is not doing well because of these few reasons, right? Or rather it has headwinds versus everything else is thing. So there are these issues, one is that, but the macro I think plays in the favor of banks longer term. But बैंक की valuations भी ज़्यादा थी in a way. So अगर आप valuation भी ज़्यादा रखोगे, like for instance HDFC Bank was trading at 35 times earnings, now it is trading at 20 times earnings. It was trading at 4 times book, now it's trading at 2.5 times book. 2.5 times book is also a lot, because SBI is trading at 1.5 times book, you know, and some public sector banks are trading at 1 time book. अब ये public sector banks भी they were trading at 0.5 times book, तो बढ़ गए हैं, and so they have gone up, HDFC has gone down, so the gap in valuation has come down. लेकिन इसमें I don't think this is an unnatural thing, this is natural. The problem we see is कि हम इंडेक्स देखते हैं ना, तो कहते हैं यार बैंक इंडेक्स नीचे चला गया, क्यों गया, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ओवर इंडेक्स था। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखें तो देन इट्स डूइंग वेरी वेल। एंड व्हाई आर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स डूइंग वेल? 2-3 reasons. I think that's a very good question. One of the reasons is a little bit of
let me tell you the bad reasons first and the good reasons later. For the bad reasons are over optimism. अब ओवर ऑप्टिमिज्म मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वी हैवंट सीन हाउ दिस होल थिंग पैन्स आउट. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5 years, we've had public sector banks merge with each other. The weaker banks merge with slightly stronger banks. उनको टाइम दिया गया and over that time they have fixed their issues. There was the over optimism has come कि अच्छा ये तो public sector bank है, अब तो बहुत अच्छा है, ये वो है ना. That over optimism is a bad idea. People have bought just because of this over optimism. That tends to be a bit of a nightmare because operationally, while it looks good, there are things that the banks have done in the past which there is no reason they cannot do in the future. Bad lending. I remember almost 6-7 years ago, it was prevalent in the market that the Indian banking sector might collapse because of the bad lending, right? There were many cases back to back. What Yes Bank did, what ICICI Bank did in the Videocon case, and people didn't know that such cases exist more, right? Or was it a tip of iceberg or not? What happened with even public sector banks of Nirav Modi and all this? So bad lending, I think, was at its peak, like 2014 kind of time frame. I think even before that, see, from the 90s, Indian lending has been, it's a terrible concept. But business has done well. नहीं, so I'll tell you what has happened is, as in what has really happened is, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट था वो लोन लेता था, लोन लेके फिर लेट्स से द लोन वेंट बैड. अब यूजली क्या होता है, मेरे पास कंपनी है, लोन इज अ लायबिलिटी, राइट? इट्स व्हाट इज कॉल्ड अ हायर लायबिलिटी देन इक्विटी. इक्विटी इज द लोएस्ट रेट. तो मेरे शेयर्स जो है, मेरे पास 50% शेयर्स हैं, पब्लिक के पास 50% शेयर्स हैं. बैंक से मैंने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है, मैं नहीं दे सका. तो बैंक को कहना चाहिए, देखो ऐसा है, आप कितना दे सकते हो? मैं 30 करोड़ दे सकता हूँ. ठीक है, ऐसा करते हैं, 30 करोड़ आप दे दो, जो 70 करोड़ मेरा लॉस हुआ है मैं उतने इक्विवेलेंट के शेयर्स ले लूँगा बैंक्स, और उस इक्विवेलेंट के शेयर्स होते हैं 40%, तो आप सब डाइल्यूट हो गए. जो 100% आपके पहले थे 50-50 दिस थिंग, नाउ यू आर बिकमिंग 30-30 एंड 40 मी. नाउ आई हैव बिकम बिगर देन द प्रोमोटर. सो बस है, अब कंपनी चल गया वापस, तो मेरा शेयर प्राइस में जो इंक्रीज होगा उससे मैं कमा लूँगा. इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है. एक तो प्रोमोटर कहता है यार ये कैसे, मतलब मैं छोटा हो गया, आपने मेरे से बड़ा कर लिया. तो वो सो आरबीआई की एक और रूल हुआ करता था कि आप बैंक कैन नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ अ कंपनी. तो बैंक कहता है यार मैं 40% लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास है नहीं, आई कांट टेक इट. बट इसके स्ट्रक्चर्स भी हुआ करते थे कि आप 10% आप शेयर्स में ले लो, आप बाकी वारंट्स में, कन्वर्टेबल वारंट्स में ले लो, बाद में उसको कन्वर्ट कर देना, अगर बेच के धीरे धीरे से आप कन्वर्ट करके बेच देना. बट नोबडी टुक दिस, किसी ने बैंकों को पूछा भी नहीं. तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहता ठीक है यार मैं लोन नहीं रिपे कर सका, आप क्या करोगे, 30 करोड़ कर दोगे? हाँ ठीक है, 70 करोड़ माफ. एंड देयरफॉर बैंक डज नॉट हैव एनी इक्विटी, नॉट इवन 10%. And this is depositors' money. Effectively government, our money, because eventually government had to put the money back into the banks, right? So taxpayer ne, and mostly now the government has been printing money to put money back in the system. Well, not government. RBI does not print money for the government to put money into banks. The government borrows money from the banks to effectively put money back into banks. So it borrows money from banks, borrows money from you and me in different ways. PPF आपका effectively government borrowing है, आपका NSC government borrowing है. All of this borrowing from us to repay the banks, and also it pays off through the taxpayer money. So tax जो हम पे करते हैं उससे पे होता है. But I feel this was a terrible idea कि लोग तो मतलब खुश हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं क्यों देना वापस लोन, मेरे पास है भी अगर पैसे, मैं उसको साइफन ऑफ कर दूंगा, वो बोल दूंगा नहीं है मेरे पास पैसे, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, 1-2 सूटकेस एक्सचेंज हो जाएगा और फिर बात खत्म. नाउ दिस हैपेंड इन वन केस इन भूषण स्टील had a 36,000 crore rupee loan. तो the promoter got caught in one case where there was a apparent exchange of money or something like that. कुछ तो हुआ था. And a lot of it happened, right? Videocon, ICICI was Videocon, ICICI. I don't know what the case is exactly about, but I know that there was talk about that, and that was a quid pro quo kind of thing. But I don't know what the scene there is exactly. But Bhushan Steel में तो there was an article that they caught them. So then they said okay, अच्छा, जो actually पकड़ा गया वो amount बहुत छोटा था.
बट द क्वेश्चन रियली वॉज कि अच्छा यही होता है. देन द गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड अ लॉ इन 2014, 15, 16 दैट टाइम कि देखो अगर कंपनी पैसे नहीं दे सकती वापस, वी विल क्रिएट अ बैंक्रप्सी कोड. अर्लियर यूज्ड टू गो एंड से नेगोशिएट करके अमाउंट कम करवा देते हैं. Which is NCLT. NCLT. No, earlier it was called DRT, Debt Recovery Tribunal. Used to do that, or used to straight away go to the banks and negotiate one-on-one settlement. Then they created NCLT. NCLT में फिर RBI ने रूल बनाया कि देखो आपका अगर कोई आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है, आपको NCLT में ज़रूर ये करना है. You have to take the case to NCLT. NCLT में क्या होता है कि instantly the management is thrown out. Okay. And a person called a resolution professional comes, takes over the company. अब चेक साइनिंग अथॉरिटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है. मतलब कोई भी चीज़ उसके थ्रू ही नहीं ही जा सकती है. इट कैन नॉट गो थ्रू द ओरिजिनल प्रोमोटर्स. अब ओरिजिनल प्रोमोटर्स रिमेंबर 20-30 years दे हैव बीन सिटिंग कि अच्छा नहीं होगा लोन तो क्या हो जाएगा. एंड दे वर लाइक शॉक्ड कि कंपनी से बाहर निकाल दें. मतलब एक तो हमने बाहर निकाल दिया और आप चेक आप ही साइन करोगे, मैं नहीं करूँगा. सो अब बाकी सबका क्या होगा. अब वो क्या होगा वॉज बिकेम अ लर्निंग लेसन. ओवर द नेक्स्ट 4 years दे फिगर्ड आउट कि कंपनी ही जाएगी हमारे से. हम इसको बिड भी नहीं कर सकते क्योंकि रूल ऐसा है कि अगर आप प्रमोटर हो तो आप बिड नहीं कर सकते अपने कंपनी के लिए. सो पीपल हु आर रनिंग SR स्टील द रूयास वर वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस. कोर्ट गए, क्यों नहीं बिड कर सकते, हम ही करते हैं बिड. आप हमको 40% डिस्काउंट जो दूसरा दे रहा है, जो दैट अदर फेलो वाज गिविंग ArcelorMittal, तो मैं भी दे दूंगा 40%, आप मेरे को दे दो. तो उन्होंने कहा कि रूल है कि आप बिड नहीं कर सकते. You're talking about ArcelorMittal, right? ArcelorMittal, Lakshmi Nivas Mittal. हाँ, Lakshmi Nivas Mittal bought ArcelorMittal bought this SR steel. I think if I remember right, that was the scene. So there was a lot of drama around this, but eventually everybody got the message कि boss ये NCLT बहुत serious business है. कंपनी जाएगी, कंपनी हमारे हाथ से जाएगी और जो कुछ मिलेगा भी नहीं, बचेगा कुछ मिलेगा भी नहीं. और शेयर होल्डर्स को ये भी पता चल गया कि देखो कंपनी अगर डूब रही है, अगर पहले ये होता था कंपनी डूब रही है, किसने बोला सेटलमेंट होना है, तो कहते थे कंपनी की शेयर्स खरीदो, अब सेटलमेंट हो गया चलो ऊपर चलते, इट विल गो अप. नाउ द न्यू सेट ऑफ रूल्स से दैट NCLT में चला गया द कंपनी कैन राइट ऑफ द इक्विटी टू जीरो. तो भूषण स्टील बिकेम नॉट जीरो बट इट बिकेम 75% ओन्ड बाय टाटा. सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गॉट डाइल्यूटेड बाय 1/3. सो जो 300-400 रुपये का शेयर था इवेंचुअली 36 रुपीज़ पे सेटल हो गया एंड इट वाज मर्ज्ड इनटू टाटा स्टील एंड ऑल दैट. देन देयर वाज आई थिंक JSW इस्पात व्हिच वाज JSW बॉट ओवर मोनेट इस्पात में जो हुआ था. आई थिंक मोनेट इस्पात आल्सो वाज 90%, 99%. इसमें बिडिंग बहुत ही स्ट्रांग चलती होगी. ऑल conglomerates would come to bid for. They came to bid, but some of the loans were so high. Bhushan was good because it was a good company, good plant, and people bid for it. But in other cases, they bid only 30%, 40% of the overall outstanding. In many cases where, say, Reliance had bid in 2 cases, both the cases they took a 30-40%. And then they said कि company के shares zero हैं. Like Reliance bought Fintechs. Fintechs had a bunch of shares outstanding. It was traded in the market. वो चल रहा था 10 रुपए पे. लोग कह रहे थे कि रिलायंस आ गया यार, अब तो बच गया कंपनी. बट रिलायंस ने कहा शेयर जीरो है बॉस. DHFL गया, इट वेंट बस्ट, इट वॉज रिजॉल्व. पिरामल बॉट इट. पिरामल ने कहा शेयर तो जीरो, मैं शेयर का कुछ नहीं करूँगा, मैं बाकी मेरा है, मतलब जो एसेट्स मेरे हैं बट शेयर जीरो है बिकॉज उस एसेट से आपका लोन ही कवर नहीं होगा यार. मतलब उस एसेट्स की मैं पैसे दूंगा. बट द न्यू कंपनी व्हिच इज ओवरटेकिंग आल्सो गारंटीज दैट हम लोन पे करेंगे, लाइक टाटा गारंटीड और ArcelorMittal yes but not all of it. they will only say कि that's a bidding. अच्छा 50,000 करोड़ का लैंडिंग है, आई विल डू ओनली 45,000 करोड़. तो 5,000 करोड़ का आपको लॉस लेना पड़ेगा. दिस इज अ क्लियर थिंग. नाउ दिस वाज बैड बिकॉज दिस वाज, आई मीन द अर्लियर सिचुएशन वाज बैड बट दिस वाज बेटर इन द सेंस एक तो बैंक्स के लॉसेस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, एक तो ओनर प्रमोटर को पता है कंपनी जाएगी मेरे हाथ से. हाँ. सो बिकॉज एक दो मे बी अबाउट 10-15 केसेस हैपन लाइक दिस. द होल ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया स्टार्टेड टू गेट अप. यार ये क्या. सो जो पहले लोन लेके नॉर्मली ही डिफॉल्ट करते थे वो कम हो गया. सो द लोन बुक ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच वाज फिल्ड विद पीपल लाइक दिस इमीडिएटली थ्रेट है ना कि सर मैं आप नहीं दोगे तो ठीक है मैं NCLT में चला जाऊंगा. And how fast resolution happens? So it can take 3 years, 4 years, it can take 6 months also depending on the thing. Mostly क्या होता है कि अब ये होने लगा कि मैं ले गया कंपनी NCLT को,
जैसे आप डिफॉल्टर हो, मैं बैंक हूँ, मैं आपको ले गया एनसीएलटी में, आपने कहा क्या सर आप 100 करोड़ के लिए आप मेरे को मेरी कंपनी से हटा रहे हो, मैं दे दूंगा आपको वापस। तो नहीं, पहले तुम दो, फिर मैं निकालूंगा एनसीएलटी से केस। तो आप कहीं से ढूंढ के 100 करोड़ लेके मेरा लोन वापस चुका देते हो, तो मैं खुश, आपने जहाँ से लोन लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तो आप आगे हो, बट आप किसी और बैंक से तो लोन नहीं ले सकते क्योंकि मैं एनसीएलटी में हूँ। तो आपने शायद अपने मतलब बैंक जितना, हाँ, जहाँ से साइफन किया था वहीं निकाल के आप मुझे दोगे। वे आई डोंट केयर कि कंपनी अब आपकी हो गई, ठीक है, बट मेरा पैसा मेरे को वापस। दिस वॉज अ गुड डेवलपमेंट कि लोग डिफ़ॉल्ट कम करने लगे और जो डिफ़ॉल्टर थे वो भी वापस आने लगे कि यार मतलब कर लेते हैं कुछ। सो दिस हैज़ चेंज्ड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. Public sector banks had this problem. This problem no longer occurs. But ये बिहेवियर वापस आने लगा है। लोग कहते हैं यार ये एनसीएलटी में ना हम चले भी गए अगर, ये प्रोमोटर ने तो सारा साइफन किया हुआ है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। 1000 करोड़ का लोन है, वो तो 20 करोड़ देगा जो बायर है। इतना तो डिफरेंस नहीं हो सकता, राइट? क्यों, कुछ है ही नहीं कंपनी में, तो अब प्रमोटर ने सब कुछ साइफन ऑफ कर दिया, मतलब और जो भी खर्च कर दिया, अपने घर, अपने लिए घर बना दिया अपने नाम पे। फिर आप क्या करोगे? आप उसके अगेंस्ट जाओगे फ्रॉड केस में, बट वो 10-15 साल चलेगा ना, तो आपका तो 20 करोड़ 98% लॉस हो गया। तो आप कहोगे यार कुछ तो करते हैं यार। देन दे गो बैक टू द प्रोमोटर से, देखो या तो हम एनसीएलटी लेके जाएंगे, पर एनसीएलटी में हमें, अब प्रोमोटर को भी पता लग गया आपको एनसीएलटी में तो कुछ नहीं मिलेगा, आप बताओ। चल ठीक है 600 करोड़ में सेटलमेंट कर लेते हैं, तो 400 करोड़ हो गया, दिस गाय गॉट हैप्पी। ये गलत बात है। आप ये जो 400 करोड़ ले रहे हो लॉस, आप इक्विटी में लो ना, शेयर आप उसके शेयर लो। आपको किसने बोला कि आप फ्री में ऐसे ही वन टाइम सेटलमेंट करो? पर करने लगे हैं, ये गलत बात है। और इट कैन गो बैक टू दैट ओल्ड फॉर्मेट कि एनसीएलटी को डिच मारते हैं, यही सेटल कर लेते हैं, बात ख़त्म। ये जो चीज़ है बहुत गलत है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आरबीआई शुड कम वेरी स्ट्रांगली ऑन बैंक, तुमने इक्विटी क्यों नहीं लिया, मेरे को समझाओ। अगर तुमने 400 करोड़ माफ़ किया है, कंपनी में लो ना 40%, और फाउंडर को भी रखो, प्रमोटर को भी रखो, और तुम इक्विटी भी लो। हाँ, फाउंडर को रखो, उसको बोलो कि कंटिन्यू करे, लेकिन आप 40% इक्विटी ले लो। बोलो कि देखो मैं तभी मैं अपने शेयर बेचूंगा, लेकिन तभी बेचूंगा जब ये। नाउ दिस हैपन्स इन अदर प्लेसेस, एवरी अदर कंट्री इट हैपन्स। व्हाई डू दे नॉट डू इट इन इंडिया? देन अदर कंट्रीज में तो ये भी होता है कि मतलब अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव वेरी ओपन बैंकिंग सिस्टम्स, बट ऐसी चीज़ों में यू कैन गो एंड सू द बैंक कि आपने क्यों नहीं लिया इक्विटी। इंडिया में तो आप नहीं कर सकते हो। I think that is just terribly unfair. As a shareholder of a bank, I will say कि bank should always take equity in case they माफ ऑफ even 1 rupee of a loan. 1 रुपया भी माफ़ किया, मेरे को equity चाहिए उसके अगेंस्ट। चलो ठीक है, equity 1 रुपया का नहीं हुआ, 20 पैसे का भी हुआ, तो मैं कुछ तो चांस है रिकवरी का, तो आई विल होल्ड दी शेयर्स। चलो 4 साल रख लेंगे, वैसे ही मैंने माफ़ कर देना था, मैं 5 साल रखूँगा, आप कंपनी को बड़ा बना लो, तब मैं बेचूँगा। अब ये कहाँ हुआ है? येस बैंक में हुआ है। येस बैंक जब नीचे गया था, देन दे सेड ऑल द बैंक शुड टेक इक्विटी स्टेक। सो सब नहीं लिया, कोटक ने लिया, ये वो, एसबीआई ओन्स 49%, बाकी सारे बैंक्स ने थोड़े थोड़े से लिए। जिसके पास येस बैंक के शेयर थे, दे नाउ ओन, दैट टाइम इफ दे ओन 100% ऑफ द कंपनी, नाउ दे ओन ओनली 5% और 10% ऑफ द कंपनी, 90% डाइल्यूशन। इसका मतलब ये भी है कि उस शेयर का प्राइस जो 300 रुपये हुआ करता था, उसका इक्विवेलेंट आज का 30 रुपया है। Because the market cap is the same at 90% dilution. Because so ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। कोटक ने बैंक के शेयर्स लिए, जब बैंक के शेयर उन्होंने 12 रुपये या 10 रुपये पे लिए थे, जो भी है शेयर का, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट जब 18 रुपये हो गया तो कोटक ने बेच दिया। तो कोटक ने पैसे बनाए, अच्छा है ना, मैंने रेस्क्यू किया था तो पैसे तो बनाऊंगा। तो कोटक ने माफ़ नहीं किया था लोन, द लोन्स वर टू अदर पीपल एंड ऑल, बट दे रेस्क्यूड द बैंक एट 10 rupees, they got 18. But I think the same thing should happen when a bank lets a company. And Rana Kapoor is in jail, the promoter of Yes Bank. Yes, so that of course that's a different problem. That because there he was going to go anyway. Banking में ऐसा होता है कि आपको NCLT की ज़रूरत भी नहीं है, RBI can straight away cancel कि आप नहीं हो सकते हो. You cannot be a part of the board, and that is fine. But the issue now has become that the banking system has started to go back. So you should be careful कि public sector banks जो हम बात करते रहते हैं कि अच्छा, ये जो one situation which had made them better,
the signs of it becoming worse are back. तो valuations आपको इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि ऐसे हो. Some public sector banks are actually quite good. So another thing happened because of the merger. A lot of the operational efficiencies changed. अब आपका बैंक ब्रांच भी था, मेरा भी था, अब हम मिला के एक ही ब्रांच करेंगे, ठीक है. So that way you consolidated branch banking, and the government created this thing. They recapitalized the banks also कि अच्छा देखो हमने आपके शेयर ले लिए, बैंक को इन्होंने बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए और उस गवर्नमेंट बॉन्ड से बैंक गॉट रिकैपिटलाइज्ड. So the equity went up. The equity is a liability. Bonds are an asset for the bank. So the equity went up. Balance ho gaya. But what happened because of this was the banks became inherently stronger. So now public sector banks are doing well. Some of the macro factors work in their favor. क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हो और आपकी रीच है, और अगर रूरल इंडिया में लोग बोरो कर रहे हैं और पैसे वापस दे रहे हैं अच्छा, then you will make money. And that is happening. However, some part of that also changed in the last quarter. कि थोड़ा सा profitability has come down, and the interest margins have come down. The fees were in public sector banks were anyway not so high. So that structure has changed. So you're getting some kind of balancing act. So I think stock markets are very happy, but there will be at some point some correction of this. It may happen 30% from here or this thing, but banks are no longer the indicators of the economy in India as far as I know. So your macro system which used to say banks में जाओ, banks economy अच्छा करेगी तो banks अच्छा करेंगे. Now they are saying India has matured. जो corporate है वो कहता है यार मेरे को बैंक से नहीं करना borrow, मेरे को बॉन्ड मार्केट से करना borrow. बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स कम भी हैं और बैंक से डायरेक्टली मैं लोन नहीं लेता हूँ, तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं तो भी ये वो. तो इन द वे द बैंक्स lending book has got fragmented. Yeah. Now the bank's deposit book has also got fragmented because companies कह रही हैं यार मैं कासा में क्यों रखूँ पैसा, मैं ना एक काम करता हूँ लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, जब भी मेरे को पैसे चाहिए होंगे मैं लिक्विड फंड से निकाल के यहाँ डाल दूँगा. Fantastic. Yeah. So it becomes a payment mechanism for me to kind of do this. So the lower deposits, and therefore banks they have to pay higher deposit rates. Lower lending because of fragmentation of the corporate lending book means that banks have said कि यार retail loan जाते हैं, रिटेल में जितना पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड जो भी है कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड ये वो. अब वहाँ पे भी ओवर इंडेक्स हो गए, तो आरबीआई परेशान हो गया कि यार तुम लोग मतलब एक चीज़ को कम कर लेते हो दूसरी चीज़ को बढ़ा देते हो पागलों की तरह, तो आई विल स्टॉप दैट ऑल्सो. सो नाउ आरबीआई इज ट्राइंग टू फोर्स डाउन द लेंडिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स. That was the one good thing. I mean, the one good thing for banks. Though it's not great for the system, but it's a good thing for banks. But that has come down. So now you're going to see some pressure on all sorts of fronts. So the macro picture does not look so. This is my assessment. I own banks. I own some banks, but I think the banks I own are good. Obviously, हर बंदा वही सोचेगा. But I think, relatively speaking, जो banks have gone through the trouble 6 months earlier or 6 years earlier, they are in better shape than the banks that are going through the situation now. And public sector banks, I will always be saying कि देखो cyclical है, अच्छा cycle है अभी, बुरा cycle भी आएगा, और उस time पे आप you'll have to react differently. Yeah. And right now, Prime Minister Modi, on an overall theme, in few days said buy PSU stocks. So I think he's not a registered stock market analyst, so I should not. He's an influencer, the largest influencer in the country. Yeah, we cannot comment about that because हर आदमी का opinion होता है. I cannot say कि just because. But let's talk about the fundamental of PSU stocks right today. PSU stocks, yes. But fundamental wise, PSU stocks have changed from two perspectives. The increase in allocation to railways and defense in the last 2 or 3 years has given them a big jump. Now, I own a bunch of railways and defense PSUs. ठीक है, I think it's fine because you're actually getting a business. Some of these businesses are inherently insanely profitable. Just example. So I won't take exact stock examples, but you will get stocks where, relatively speaking, their working capital cycle is negative, which means they get money in advance and then they do their work.
There are some shipbuilding companies who are like that. There are port companies whose economics have changed because government has focused more on port modernization. There are other companies where because of the restructuring of, say, transmission assets versus this thing, so the companies on the power transmission networks, the power generation networks, who have benefited from another piece of rule change that has happened 5 or 6 years ago. वहाँ पे क्या हुआ था कि अगर आप किसी पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते थे, प्रॉब्लम बहुत से होती थी कि यार ये पावर प्रोड्यूस शायद नहीं करेगा क्योंकि कुछ हो जाएगा, इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, या फिर ट्रांसमिशन लाइन रेडी नहीं होंगे, या फिर ट्रांसमिशन लाइन वाला बोलेगा मेरे को 4 रुपये पर यूनिट चाहिए, जो भी है 40 पैसे पर यूनिट चाहिए, जो मैंने इकोनॉमिक्स में 20 पैसे रखा था। या फिर जो एंड बायर है वो कहेगा यार मैंने तुमसे 6 रुपये पर यूनिट बोला था, लेकिन अभी मार्केट में 4 रुपये चल रहा है, मैं 4 ही दूंगा। ये सारे जो थे, इसकी वजह से ये द पावर फाइनेंसिंग कंपनीज वर गेटिंग लाइक बैंकक्रप्ट, इंक्लूडिंग बैंक्स। तो there's a regulator for the power sector and they said कि देखो ऐसा नहीं करते हैं, ये पागलों वाला काम है कि तुम सबको बोलो कि मैं नहीं करूँगा ये वो। आप कॉन्ट्रैक्ट करो ट्राइपार्टाइट, ट्रांसमिशन गाय, फाइनेंस गाय, और नॉट इवन ट्राइपार्टाइट, मल्टी पार्टी बेसिकली, और बायर, the seller, the producer of the power, the transmission line, the financier of the asset. So all of these guys get a guarantee कि देखो ये power होगा ही होगा. And the state governments agreed. They created another program that said आप अपना loan कम करो from the distribution companies, electricity companies, and transfer those assets to transfer some of those loans to the government itself. Instead of being a DISCOM loan, distribution company loan, let it be a government loan, state government loan. So वो उदय scheme था. So the Uday bonds are still trading, by the way, of a lot of states. Now, because these things improved over time, the distribution companies started paying. And now you can buy power in 15-minute increments. मतलब 15 मिनट के लिए मेरे को इतने गीगावाट्स चाहिए, इतने मेगावाट्स चाहिए वगैरह. यू कैन बाई इट इन, इसका प्राइस पर यूनिट ये होगा. देयर इज अ साइट कॉल्ड vidyutprava.in. देयर इज अ कपल ऑफ अदर साइट्स आल्सो. दे टेल यू कि अभी का बिडिंग रेट क्या है. So because of this change in this power things, the power financing companies, the power generating companies, and the distribution companies have, not the state discoms, but the transmission companies have a massive benefit. Because pehle, I did not have any this thing, now I'm getting a much better, so it's taken 5 or 6 years. And based on this, what has happened is the Central Electricity Commission has said कि हर contract का थोड़ा सा 0.1% or something like that will be taken out and will be put in a pool कि बाई चांस कल किसी का डिफॉल्ट हुआ तो हम इस पूल से पे करेंगे. डिस्कॉम बोलता मैं नहीं दूंगा पैसे, चलो इधर से. So it becomes like an insurance pool. That insurance pool has reached 3,000 to 5,000 crores, something like that. So it's a fairly good asset. So now if you look at a 500 crore a project, then you say यार pool में है ना 5,000 crore. So it's more surety for all parties working on the project. This is a very good development. Now here nothing bad is happening per se. So I feel here that some of the revaluations that have happened of these companies is more or less in line. So Power Finance Corporation, again, we own some of that. So that was trading at 2 times earnings. Now it is trading at 8 times earnings. No, 4x. So 2 has become 8. But it is not necessarily overvalued even now. कि आपने इकोनॉमिक्स को ठीक कर दिया ना, आप मेरे डिफॉल्ट्स कम कर रहे हो, आप मेरा कैश फ्लो कम करवा रहे हो, या मैं प्रॉपर करवा रहे हो, तो वाई शुड आई पे यू सच अ स्मॉल मल्टीपल? आई विल पे यू अ हायर मल्टीपल ऑफ दैट. सो दैट वे थिंग्स हैव चेंज्ड. एंड देन नाउ देयर इज अ फोकस ऑन रिन्यूएबल कि 6 लाख करोड़ होंगे, 10 लाख करोड़ होंगे, ये वो. दैट इज द PSU. So look at the PSU financing companies, the PSU defense companies, the PSU railway companies, the PSU banks. So each of them has some tailwind behind it. And therefore, I think some of the revaluation has happened. But there are headwinds also. PSU banks are more visible, but not so much visible than the others. Because if government continues to build its defense capabilities and defense में क्या हुआ है, they have said कि देखो Indian companies should manufacture, not foreign companies. So earlier क्या होता था कि अगर कुछ लेना है तो foreign company के पास जाओ, तो ministry को they would get
flight, even defense people would get to fly to that foreign country. तो अच्छा हॉलीडे हो जाता था और वो कहते थे कि चलो जो है मतलब वो क्या है वो इतने सारे लेने हैं कुछ जो भी ले लेते हैं 10 लोकेशन पे जाएंगे, हाँ 10 छुट्टी होंगी, छुट्टी होंगी एक जगह से and खरीदेंगे. हाँ द इशू दैट विद दैट वाज कि देखो इसमें कह नहीं सकते कि वाज दिस द बेस्ट. Yeah. सो नाउ दे आर सेइंग कि देखो ये चीज़ है आप खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते. महिंद्रा को बोला गया कि हमने जो गन्स लिए थे वो बोफोर्स वाले गन्स फॉर इंस्टेंस द एंड द हाविट्जर्स एंड ऑल दैट द उसकी जो बुलेट्स हैं they called something, I forget what it's called, ammunition or something it's called. That was some part of it was manufactured abroad and we used to import the bullet. Why are you doing that? Why don't we make it here? So that stuff started to be made here. Ukraine में this became a bigger deal because जिस तरह से अमेरिका ने they sequestered the assets of Russia. तो इंडिया बोलने लगा यार कल हमारा किसी से फाइट हो गया जैसे पाकिस्तान से हुआ है कुछ भी हुआ यूएस तो कह सकता है आपको बुलेट नहीं मिलेंगे और जिस कंट्री ने हमको बेचा है वो गन उसको बोल देगा इसको ना भेजो. तो हम सारी चीज़ें वी शुड बी डूइंग इट लोकली. सो दैट डूइंग इट लोकली हैपेंड एंड दे वेंट टू द डिफेंस पीएसयू से आप मैन्युफैक्चर करो इसको आप टेक ओवर करो इनका हम कॉन्ट्रैक्ट आपको देंगे आपको पार्टनरशिप करने किसी के साथ तो आप करो हम नहीं करेंगे. So we will tell you the specifications, you bring it, you guys champion the projects. This is very interesting because now you get some of these shipyard companies building the ships themselves instead of us importing, telling somebody else ki aapka ship. So the shipyard companies goes and partner with some foreign player, but कहते यार technology तो आप हमें दोगे. And then they manufacture the ship. This is interesting because although it takes a year and a half to manufacture a ship, it's or maybe 2 years, your economics are a little bit better because you're dealing directly with the government rather than saying कि मैं तो agent हूँ ये वो. This continues to be a good thing for some of the PSUs, but not all PSUs are good because some PSUs will not get इज्जत चाहे कुछ भी कर लो. Some HMT for instance, though it's not listed, there were issues, the companies did not do it. Air India, finally they sold it. Air India, even after getting acquired by Tata, I think the standard of quality hasn't come up. See, Tata is a PSU for the most part. This guy is trying to change. Chandra is trying to change the attitude. Things have developed much better in some of the Tata companies, but for the most part, Tatas have generational legacy inside some of these companies. They will not go and change anything. You cannot imagine कि कल Tata will go in and fire half the Air India people and say कि देखो आप सब काम नहीं कर रहे हो मैं दूसरों को लूँगा जो काम कर रहे हैं और आपको हटा दूँगा. ये टाटा के कल्चर में ही नहीं है ऐसा. बाकी इफ़ यू कंसिडर सम ऑफ द अदर गाइज दे विल डू इट. नहीं देंगे यार आपको आप काम नहीं कर रहे हो. बट बिकॉज ऑफ दैट द चेंज इन एयर इंडिया विल बी वेरी ग्रेजुअल एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल टेक a lot of complaints also ki how are you. So over a long period of time I expect that Air India will change, though to be fair it's only been 2 years. Tata thinks in terms of decades. So you should also expect ki change will happen in decades. Got it. And do you feel the entire Indian stock market, this is a very generic term, so but is overvalued right now? On what basis? On just earnings to multiple basis. So earnings multiple basis is about 24.5 25 times. It has been 28. It has been much more for a longer time. There are at least the market's been here about 30% of the time. It may be marginally overvalued compared to the past, but there have been so many instances in the past when it was 25 times earnings and still has done very well in the next 1, 2, 3 years. And I'm talking very well as in अगर आप 3 साल में 25% कमाओ तो effectively you're getting FD rate. अगर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कर रहे हैं मतलब FD से ज़्यादा कमा रहे हो. So the market as a whole has earned more than inflation in a 3-year period, even when the starting PE was 25 at the past. So is that overvaluation? I would say, in fact, the graph of this is so spread out. Because even at 35 times earnings, there have been enough times where market has done really well. For instance, COVID was a 30 plus times earnings at some point because earnings crashed.
But from there, markets did really well, right? So this multiple of earnings is not even an indicator of overvaluation. What in your sense is an indicator of overvaluation? I think overvaluation is largely about understanding liquidity patterns. If liquidity patterns are flowing into the market and creating a lot of froth in a lot of companies, maybe not the market level PE ratio, but some PE ratios of some companies may be unjustifiably high. Example? Today, for instance, I think MNC valuations are unjustifiably high. I think you should not pay 80 times earnings for Nestle. You just shouldn't. It's a company that will grow at max 5 or 6%. Thoda sa apna, For example, Unilever also similar. It won't grow at that much. Yeah. But you're giving it 60 times earnings, 70 times earnings. Kyun? It sounds more. We are also giving Titan same kind of. Titan at least has some growth. मतलब आप 20% पे grow कर सकते हो. Titan भी overvalued है in that sense. That you are giving a very high multiple to a company that grows. I think Trent has growth. Trent has 35% growth. So you can actually say कि 35% growth में अगर आप मैं 50 times या 60 times भी दूँ, so over time it will come down to 20 times because the valuations are such, and therefore you can expect that through growth hoga. But without growth, when you give an extremely high valuation, then you are getting this thing. But MNCs, MNCs have been overvalued for nearly 8-9 years. So reverse कैसे होगा? गिरेंगे तभी. Now what has happened in the last 3 years is very informative. They haven't gone up, everything else has gone up. So in that sense, people think कि यार वो नहीं गए ना तो वो नीचे नहीं गिरेंगे. मैं कहता हूँ जब गिरेंगे सब गिरेंगे. आपको बस थोड़ा सा इक्वलाइजेशन हुआ है अभी, थोड़ा सा. आप 100 times पे थे, आप 80 times पे आए हो. आपको देना चाहिए 25 टाइम या 30 टाइम. So you should actually be falling 30, 40, 50% just to come to an equalization in terms of your normalized long-term growth plus your high ROC. I would say that is the key part of the picture. But the same thing is also there in some small caps where you're getting 400 times earnings, 500 times earnings, but they don't have the earnings to catch up. There's a lot of froth, a lot of fraud, a lot of misrepresentation. I think small caps have the highest amount of froth right now. There are a few reasons, in my opinion. You can elaborate that. One is the ease of listing on SME exchange, because SME exchange पे उतने regulations नहीं है, कोई देख नहीं रहा. Right, so I can tomorrow list the podcast itself on SME exchange. That's a micro cap, yeah. So it's while they call it SME, it's actually micro caps. Yeah. There are 60 people who at 5 crore revenue have gone IPO and all that. वो तो यार वो एक जसपाल भट्टी का हुआ करता था पीपी वाटर बॉल्स. वो किसी पानीपुरी वाले को बोला कि हम आपका IPO करवाएंगे और किसी उसका कंपनी का नाम रखा पीपी वाटर बॉल्स और बेच दिया और and everybody made money except the shareholders. So that is okay. That is fraud, or rather not fraud, misrepresentation, overselling, froth bhi nahi. See, you should represent a company properly, and if you don't represent a company properly when you this thing, then there was a company 2 years back, I forget the name of the company. After the IPO, they had a party ka wo YouTube video pe banaya and all that stuff. Ek din in March of some year, I think 2022 or something, एक लेटर आया एक्सचेंज को कि देखो ऐसा है, आई एम द ओनली पर्सन, आई एम रिलेटेड टू द प्रोमोटर नेफ्यू हूँ, मैं 24 साल का हूँ, आई एम द ओनली पर्सन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इज़ कॉन्टैक्टेबल, नोबडी एल्स आई कैन ज्वाइन. मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री भी बंद था, फैक्ट्री में कुछ था ही नहीं. ये सेमीकंडक्टर हुआ करता था, व्हाटएवर दे टॉक्ड अबाउट, बट नथिंग इज देयर. So technically, this company has nothing happening. I will try and figure out कि क्या हो रहा है. I am 24 years old. I don't know much. Now this is a company owned by some famous investors also. कि उन्होंने promoter से बात करके they did their diligence and all and bought it. But it turned out to be a complete fraud. The company went to zero, because there was nothing left in the company. But that also happens. So that happens in over enthusiastic times, and maybe today also that is happening. But small caps, when I say small caps today, but the actual definition of what SEBI or AMFI does is between, I think, 17,000 crores and 40,000 crores roughly, or 30,000 crores. So because of that, your small cap companies are relatively highly valued in terms of actual market cap. A lot of small cap companies have actually done very well in terms of earnings growth. तो आप कहते हो कि small cap companies are overvalued in that sense. But
टेल यू दिस, बिफोर कोविड 2019 उनका जो पी रेशो हुआ करता था फॉर द स्मॉल कैप्स, विच इज स्मॉल कैप्स बीइंग द 250th stock. So first 100 is large caps, 101 to 250 is mid caps, 251 to 500 is small caps. उसके बाद माइक्रो कैप. 251 to 500 हमने कहा कि सारे ऐसे कंपनीज को आप उसकी अर्निंग्स आप ऐड करो और मार्केट कैप आप ऐड करो तो मल्टीपल आ जाता है. और 2019 में करो कि जो कंपनीज उस टाइम पे मार्केट कैप 251 to 500 थी उनकी जो मल्टीपल है वर्सेस द मल्टीपल टुडे इज द सेम. मतलब their valuations have gone up 3x, but their earnings have gone up 3x. That means from 2019 to now, which is roughly 5 years, 4.5 years, your earnings has grown exactly as much as valuations. So why would you think they're overvalued? Because they've gone up 3x in 5 years, you कहते हो यार 3x 5, but their earnings also grown. Are they bad? I don't know. Not all of them are bad. And what about micro caps? Micro caps are, there's always going to be some fraud. Because and they're overvalued right now. Some of them are. I don't know about all of them, but microcaps do have a lot of fraud. In the sense, a lot of companies are जो 100-200 करोड़ की हुआ करती थी ना 4,000 करोड़ के हो गए. Some of them are justified because they've changed the EV में कुछ companies हैं and all that stuff. But some of them are just like कि यार प्रोमोटर ने पकड़ कर रखा हुआ है शेयर और बाकी किसी को बचे ही नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए. सो पीपल आर साइक्लिंग एंड मूविंग अप. बट दैट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मार्केट. कुछ भी करो वो फ्रॉड तो होता ही रहता है. एंड व्हाट अबाउट इन योर ओपिनियन, फॉर एग्जांपल startups going IPO, right? Some companies like Oyo going IPO, is it a good trend? Because is it like कि बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं? देखो फटना ये है कि हाथ सिर्फ बहती गंगा में धोया जाता. मतलब आप पानी नहीं है तो हाथ तो नहीं धो सकते हो ना. तो फिर यू विल ओनली गो IPO व्हेन यू थिंक कि मार्केट पैसा देगा. बाजार में तभी सामान आएगा जब ग्राहक पैसे देने को तैयार होगा, राइट. अगर मेरे कपड़े का कॉस्ट है 50 रुपया तो मैं थोड़ी 30 रुपये में बेचूंगा. आई थिंक इट इज़ 50 रुपये, 50 रुपये में बेचूंगा नाउ, और या फिर 100 रुपये में बेचूंगा. अगर कस्टमर मेरे को 200 रुपये देने के लिए तो मैं और कपड़े बना के बेचूंगा. लेकिन ये भी नहीं होता कि ना हो, राइट. ये ज़रूर होता है कि अच्छा इसको एनालाइज करो, आपको अच्छा लगे तो ले लो, नहीं अच्छा लगे तो ना लो. हमारे स्टॉक मार्केट में लोग ऐसे हैं जो दे विल कम एंड से कि भैया मैंने तो ले लिया, मेरा लिस्टिंग डे पे 3 गुना हो गया, मैं खुश, मैं निकल गया. ये वाले होते हैं वो क्या कहते हैं वो यार एक तरह से दे आर द हार्डकोर स्पेक्युलेटर्स. वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू देम. अगर इन लोगों का पैसा डूब भी जाता है, आई डोंट केयर. They are not investing in the stock market for making long-term money. They are not here to support a company. तुम अपना गैम्बलिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग में हार गए, कसिनो के जैसा समझो और निकलो. I don't care. Now the question is whether long-term investors are getting wrong information from companies. That would be wrong. Then I would say. But if a company like Oyo wants to go IPO और आप खरीदते हो, why would you blame Oyo for going IPO? Yeah. आप खरीद रहे हो ना, आपको अच्छी लगी तभी आपने कंपनी ली. अगर उसमें कोई गलत निकला तो आप बोलो, नहीं तो आपको खुद फोर्स करके बोल रहा है कि आप ओयो ही खरीदोगे. वहाँ इंडियन होटल भी है, ओबेरॉय होटल भी है, इतने सारे होटल कंपनीज, आप क्यों नहीं उसको खरीद रहे हो? आप जाके ओयो खरीदोगे. आप फिर बोलोगे कि ओयो का प्राइस नीचे गिर गया तो मेरा पैसा डूब गया या जो भी है. पर आपके पैसे डूबे ना, आप जो प्रॉफिट बनाते हो आप ही बनाते हो. अब देखो एक चीज़ है, मामा अर्थ था, उसका IPO हुआ, ट्विटर पे इतनी ज्ञानबाजी चली यार, इस म्यूचुअल फंड ने इसको सब्सक्राइब किया, इसको बेचो आप म्यूचुअल फंड को क्योंकि घटिया है, ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है. मैं कुछ अभी तक तो मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. पीपल ऑल्सो सेड दिस कि मैंने कहा नॉट इम्पॉर्टेंट बट सॉरी देयर मेनी पीपल हु हैव सेड दिस. अब देखो मामा अर्थ का जो प्राइस है इट इज मच हायर देन IPO प्राइस. कोई आके सॉरी नहीं बोलता कि मैंने आपको एडवाइस किया कि बेचो. और अब मतलब अब वो लोग किसी और चीज़ पे आउटरीच कर रहे हैं. आपने अपने दाएं पैर पे मुझे मतलब व्हाटएवर. सो द इशू दैट पीपल हैव विथ IPOs आई थिंक इज
ये नहीं समझ आता उनको कि ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा आईपीओ में सब्सक्राइब करने को, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आईपीओ में सब्सक्राइब करोगे तो बहुत पैसा बनेगा। ये कौन बोल रहा है? वही आदमी बोल रहा है आपको जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आईपीओ के दिन बेच देते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब वो नशा है, अगर आप नशा करोगे तो शिकार भी आप ही होगे, वट एवर, एट सम पॉइंट शिकार हो जाओगे, एंड समटाइम्स यू विल फील हाई। दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। आई डोंट थिंक वी शुड से कि ओयो जैसे स्टार्टअप अगर आईपीओ कर रहे हैं वो बुरा है, गलत। वी शुड बी मोर डिसर्निंग एज अ सोसाइटी एंड से कि यार मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं नहीं लूँगा, आई हैव अदर कंपनीज टू बाई। ये जो हर चीज़ जो नहीं है उसी को खरीदनी है, ये क्या है? आप अभी, पहले हुआ करता था कि सेकेंड हैंड कार जो थी दे वुड बी बैड, पीपल नई गाड़ी खरीदते थे इसलिए क्योंकि नई गाड़ी तो नई गाड़ी है। अब जो अगर 10 साल पुरानी भी गाड़ी है ना, इतनी अच्छी बनी होती है कि यू कैन बाय देम, इट इज़ परफेक्टली फाइन। इन अ स्टॉक मार्केट इज़ द ऑपोजिट। जो कंपनी 10 साल से चल रही है वो एक्चुअली बेटर है आईपीओ से। आईपीओ में क्या पता है, क्या ही पता होगा आपको, आप चलने दो उसको 3-4 साल, उसके बाद खरीद लेना। Nobody is pointing gun at your head कि आज ही हाँ खरीदो। आज ही खरीदो। यही चीज़ है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपर्टी ले ली, फिर आपने कंप्लेन किया कि बिल्डर ने देर से दी थी। आपने क्यों खरीदा अंडर प्रॉपर्टी? That's the right comparison. करेक्ट। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप लोगे तो एक टाइम पे आप रोगे, एंड व्हेन यू क्राई इट इज योर फॉल्ट। ऑफ कोर्स द बिल्डर कैन से कि मैंने ट्राई किया ये वो। Under construction property is a gamble कि बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, एंड यूजुअली इट्स ओके एज अ गैम्बल क्योंकि लोग बनाते हैं घर। बट माई पॉइंट ओवर दिस इज यू हैड द ऑप्शन ऑफ बाइंग अ फुल हाउस, ओनली यू हैव टू पे मोर ना। थोड़ा सा 4 साल जो वेट कर रहे हो, थोड़ा और कमा लो तो 4 साल में आ जाएगा उतना पैसा। यूजुअली दैट इज द सीन। लेकिन लोग लेते नहीं है। और मैं पैसे, इतने सारे पैसे एक टाइम पे कैसे दूँ? मैं तो ईएमआई दे के बनाऊंगा। तो घर में रह के ईएमआई दो ना यार। फिर यू नो व्हाई डू आई लेट अस से आई हैव सीन दिस माई सेल्फ with under construction properties, and I think the same thing with stocks. अगर आप ले रहे हो किसी को without any track record, public track record, then you are buying on hope, and when you are buying on hope नष्ट भी हो सकता है, hope positive भी हो सकता है, and many times people make lots of money. अब लोग कह रहे थे Zomato था, Zomato we have bought a little bit of Zomato, so I am biased that way, but if I bought Zomato and at IPO, then you'll say कि बॉस ये तो मतलब 70 था, नहीं पहले 70 था। हाँ. मैंने IPO के बाद खरीदा 100 रुपए पे। हाँ. 140 चला गया, मैं जीनियस हो गया। अब 140 से 40 रुपए गिर गया। हाँ. मैं बर्बाद हो गया। हाँ. अब 160 है। हाँ. तो मैं फिर से जीनियस। ये क्या है? मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट ही करना था तो ही डिडंट थिंक कि जोमेटो 2-3 में, मैं खुद आई इन्वेस्टेड, आई गॉट आउट बिकॉज आई सेड ये ब्लिंकिट मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो नाउ दे हैव शोन कि ब्लिंकिट मेरे को फिर भी अच्छा नहीं लगता, पर जोमेटो में जो जितना उसका कैश है 10-12 हज़ार करोड़ का, जितना वो इंटरेस्ट उस कैश पे कमाता है, उसी से ब्लिंकिट के लॉसेस निकल जाते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, तुम खेल लो के कैश से, मेरे को तो तुम्हारे कोर धंधे से इंटरेस्ट है जो दिस थिंग है। तो ब्लिंकिट जो बनाता होगा, आई डोंट केयर। यू मे इवन टर्न इट अराउंड, बट आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ अ बिजनेस. But if it becomes your only business, I have a problem. But otherwise, I am fine. You've done the rest of the work properly, and I will. So that is my thinking, right? So other people may think differently. Why is nobody forced me to buy? Nobody forced me to sell. Nobody forced me to buy again. I did it on my own. So अगर loss होगा मेरा, तो मैं responsible हूँ ना. I mean, मैं किसी और को नहीं बोलूँगा कि यार उसने बोला था जोमेटो खरीदने को। मैं किसी को नहीं बोलता जोमेटो खरीदो। आई बॉट, देखो तुमको खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारी मर्जी है। तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा बिकॉज आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ एडवाइजिंग पीपल व्हाट दे शुड बाय। And I'm in the business, we have a business that actually does research on a company and we put recommendations on buy, and those are there's a research recommendation, there'll be a note against it, our customers will get it and so on. But when we talk about mostly when a stock, I'll say I have it. Should you buy it? That's the answer to that. And I think everybody should look at it like that only. यार कि मैं आपको बोलूँगा ये मोबाइल फ़ोन खरीदो, आप थोड़ी सी जाके ऐसी खरीद लोगे, आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना उसको, थोड़ा सा आप यूट्यूब वीडियो देखोगे दिस वर्सेस दैट। अब हर मोबाइल फ़ोन का, हर और मोबाइल फ़ोन के साथ एक तो वीडियो कंपैरिजन है ही, अनबॉक्सिंग से लेके पता नहीं क्या क्या। पर अगर 10 लोग
जिनको मैं जानता हूँ वही बोलने लगे कि मोबाइल फ़ोन खरीदो। आई एम नॉट सेइंग कि उनका गलती है, मैं कहूँगा तब भी मेरा गलती है क्योंकि करेक्ट। अगर आप बट लेते हो, एवरीबॉडी विल आप गॉट यू इन्फ्लुएंस्ड। यू एक्चुअली गो टू योर फ्रेंड्स एंड से क्या यार घटिया फोन दिलवा दिया, वो कहेगा नहीं मेरा तो ठीक चल रहा है, आप क्यों, आपको आपको क्यों नहीं नहीं मेरे को ना वो 5 स्पीड गेम खेलना था, तो आपने बोला नहीं, मैं तो खेलते ही नहीं 5 स्पीड गेम, नहीं वो ठीक नहीं चल रहा है उसका, वो whatever some. So this concept की, and I'm telling you, when my father passed away, there was a situation where somebody he said, एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि देखो आपके फादर ने हमें बोला था कि ये शेयर खरीदो. No, I don't know this person and he's telling me, so I have to believe. I said, it's okay. So I said, नहीं वो ना शेयर में लॉस हो गया. तो मैंने कहा अब क्या? He said, आप यूजुअली हमारे धंधे में ये होता है कि लॉस भरना पड़ता है. कहा मेरे फादर ने आपको सिर्फ एक शेयर बताया ज़िंदगी में, अगर बताया भी होता मेरे को, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आपको सिर्फ एक, नहीं बहुत सारे, तो बाकी शेयर में भी आपका लॉस हुआ? नहीं वहाँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ. तभी तो हम सुनते थे वो प्रॉफिट हमें दे दीजिए फिर. मैं आपको लॉस दे दूंगा. हाँ तो नहीं वो तो प्रॉफिट तो हमारा है. हाँ. मैं कहा तो लॉस भी आपका ही है. तो ये समझ नहीं आता ना. आई एम नॉट, एंड आई वाज 24 एट द टाइम एंड आई डिडंट नो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. मैंने कहा कि अच्छा प्रॉफिट तुम्हारा लेकिन लॉस हमारा, ये मतलब ये कहाँ से आता है? आई डोंट नो अ डैम थिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एट द टाइम एंड लिटिल बिट ये वो, बट आई फील दैट ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इंडिया में बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में. ये हमारा आईपीओ जाएगा तो कंपनी ऊपर जानी चाहिए, ये किसने बोला यार आपको? कब विच पर्सन सेज कि आपकी राइट है कि ऊपर ही जाए? आई थिंक दैट इफ वी गेट रिड ऑफ दैट, half the discussions on Twitter will be over. So कि ये है वो है ना. This is also why I tell people कि देखो जब आप अगर IPO कर भी रहे हो, please consider that people love you if your share price is low and people hate you if your share price is high, because high से नीचे चला गया people remember, low से ऊपर चला गया चाहे उस high से low से ऊपर जाके फिर नीचे आया ना, फिर भी they love you. So I tell people कि undervalue your stock at IPO. क्या फ़र्क पड़ता है, तुम थोड़ा सा गवाओगे थोड़ा सा, एंड ओवर टाइम आपने सिर्फ एक बार नहीं बेचना है. IPO में तो थोड़ा बेचोगे, बाकी जो बेचोगे बाद में बेचोगे, तो जब बाद में बेचोगे तो आपकी बेटर वैल्यू आएगी क्योंकि लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपको कि आपने कम पे हमें नीचे पे IPO किया. तो ये चीज़ बहुत लोगों को समझ नहीं आती है. आई थिंक नहीं आएगी बिकॉज ईगो का गेम है यार. मेरा IPO 100 रुपये चला गया, उसका IPO 200 पे है, मैं कम क्यों करूं? और अदर 20 टाइम्स उसका 20 टाइम्स अर्निंग्स पता, मैं आप 18 पे क्यों दूँ? सो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इट्स लाइक इंडिया में डिस्काउंट हमेशा चलता है राइट. आप जितनी अमीर हो कुछ भी हो, आप 50 लाख का डायमंड दे रहे हो, बोल दो 10% डिस्काउंट, वो खुश हो जाएगा. वो why would a person who's paying 50 lakhs have a problem with paying something like needing a 5 lakh discount on a diamond? But of course he likes a discount. Everybody loves discounts. So India is almost exclusively happy about not exclusively, I think every country people are happy about discounts, but I'm saying that there's no difference between the rich and the poor here. And therefore this idea, so because of this idea that discount should be a given, we also have this funda ki we should always make money in IPOs. I don't know how that translation has come कि IPO में सिर्फ पैसा बनना चाहिए. ये पार्ट मैं कभी समझ नहीं पाया. That's why I keep wondering whether when you say कि is it a good thing that OYO go, I think it's a good thing that they go IPO, but is it a good thing that you buy the stock? I don't know. Yeah. That is, and you buy the stock at IPO. You buy the stock after 5 years. अलग है यार, things would have changed, and I don't even know. OYO might be a fantastic company. I haven't seen the prospectus yet. Maybe there'll be a later prospectus whenever it comes. But I know that there are lots of companies that want to go IPO, and some of them are probably brilliant businesses in the future. I'll give you an example. The company we bought one, I won't name it because we're still buying it. Actually, we're buying a lot of companies, so we continue to this thing. But at IPO, it was valued at X. अरे IRCTC देख लो, IRCTC was valued at 300 rupees per share at IPO.
तो लोगों ने खरीदा, फिर गया 900 रुपया, लिस्टिंग पे 600 था, बहुत जल्द 900 रुपये हो गया. I saw the financials of it, something has changed and that something was so big. मैंने कहा 900 रुपये भी चीप है, तो हमने खरीद लिया. 900 से 6000 चला गया, फिर 6000 से 4500 गया. आई सोल्ड इट बिकॉज आई सेड बॉस ऑलरेडी मेरा ओवर वैल्यूड था, पता नहीं कितना. आई विल नॉट सेल फॉर ओवर वैल्यूएशन बिकॉज आई माई फंडा स्टॉक्स कैन विच आर ओवर वैल्यूड कैन गेट इवन मोर ओवर वैल्यूड. तो सिर्फ ओवर वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए रीजन, दिस शुड बी अ फंडामेंटल रीजन, बट समथिंग केम फंडामेंटली दैट ब्रॉट डाउन द वैल्यू ऑफ IRCTC and that is why I sold it. But from 900 to 4500, still a 5x return in maybe a year and a half. There is no fear. अगर आप मेरे को देख के बोलोगे सर आप IPO में 300 रुपये ले सकते थे, शायद ले सकता था, पर फायदा क्या है उसका? मेरे को कुछ नहीं पता था कंपनी के बारे में. आफ्टर द IPO when they started making the releases is when I started to realize that the real potential of the stock was. And the same thing happened with LIC. Again, we have a big position in LIC, and we saw the revelations that came in the prospectus. We saw the stock fall. We said it's interesting. Should I be unhappy about LIC falling after IPO? I don't care. मैंने अगर लिया भी था तो maybe I would have taken a small position at IPO. We can't touch IPOs as a PMS, but when the stock fell and came back up, that is when you get opportunities. And sometimes the stock keeps going up, even then there are opportunities. So there is no reason why you should say that there are no opportunities in IPOs. OYO may be a great stock at some price, or it may be a horrible stock at any price. So I don't know what the answer to that is right now. And last time in a podcast, we discussed about Jio, and Jio Financials ranks 7th in the most active stocks in India. Is it still that? Okay. I don't know. I guess, see that we own the company because we got it as a process of demerger. So हमने रखा हुआ है, but we have not added to the position because the company has not started operations yet in any meaningful way. अभी जो पैसे कमाता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे कमाता है, जो उसके पास कैश बैलेंस है. कैश है 10-12 करोड़ 15,000 करोड़ आई थिंक, एंड दे अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट एंड दैट इज देयर अर्निंग. अब जो कंपनी इंटरेस्ट में पैसा कमा रही है अपने कैश बैलेंस पे, उसको थोड़ी मैं 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन दूंगा. कुछ तो होगा अंदर, कुछ तो होगा का आंसर अभी तक नहीं आया. सो आई एम हैप्पी टू से कि देखो दिखाओ मेरे को, मैं आपको 3-4 साल देता हूँ. I'll keep a small position. आप मेरे को दिखाओ आप अच्छा कर रहे हो तो मैं और लूँगा. But why this is a 7th rated stock, I have no idea. I don't know if other people are asking these questions or not asking these questions, but I think they have their own mechanism for valuing it. It's not just owned by me, it's owned by institutions, it's owned by hedge funds, mutual funds, foreign institutions. So at some level they have more answers to the questions that I don't have answers to. So maybe they have bought because of that. All I know is that it's done well even from the demerger time frame. It has made your total Reliance, because we invested in Reliance maybe 3.5-4 years ago roughly, and that investment includes now the Jio Financial. So अगर 2,800 का Reliance है और 200 का Jio Financial, I look at it as मेरे को 3,000 रुपये का रिटर्न है. That's the way I think about it. Until Jio Financial becomes an independently operating entity and I can analyze it properly, to me it's just like मेरा extra return है. Understood. And Yes Bank, Vodafone and Dish TV make up the right now among the top most active stocks. Really? Yeah. Oh my God. Dish TV? Yes. Of all things, my God. Okay, I have no idea. I don't know how much of the delivery volumes these are. A lot of intraday hota hai. Speculators playing on it and all that. In Vodafone is probably because Vodafone is technically bankrupt right now. Its equity is negative. Matlab, I don't have any equity, and technically I have so much debt, and most of the debt is to the government. The government is already owns 33%, so anything more it will become a PSU by definition, I think, at 51%. But effectively what Vodafone is now going to be earning almost everything that it earns and has to pay the government a substantial amount of it. It's lost market share, it has eroded in this thing now, but it survives because there's a Birla name behind it. But Birla is not putting more money behind the stock, neither is Vodafone. So at some point, I feel that there is a problem in this company.
unless things change. Now, people may know more than me. That's why they're buying the stock. I am avoiding. But I feel that is just pure speculation. I don't see any concrete reason to buy it. Dish TV has similar. I don't see why that would survive as a company. Maybe it will. Maybe I'm wrong here. Again, we don't own anything in these two stocks. Yes Bank. Yes Bank. I told you, right? Yes Bank issue was 300 रुपए पे था, अब 30 रुपए पे, same valuation, right? So there's a lot of speculation. It's a phenomenally well technologized bank. It is also now stable because there is no problem, as much problem in asset quality and so on. So that way it's a stable stock. But with it, if you're thinking that 30 रुपए का 300 हो जाएगा, at 300 it will be valued at more than Reliance Industries. Yeah. So I think, I think so at least. And I would say that should not, because you should analyze it a little more. But, there's one thing, when people are digging for gold, and there is no gold there, let us say, or at least you think there's no gold there, आप जाके उनको बोलोगे क्या यहाँ पे गोल्ड नहीं, आप डिग करना बंद कर दो? नहीं कर रहे हो तो करने दो यार, तुम्हारा अगर आपको पब्लिकली एक नोटिस बोर्ड में डाल दिया गया हो यहाँ पे गोल्ड नहीं है, तो लोग देख के फिर भी कहते हैं ये तो झूठ है, मत करो, ये तो यहाँ गोल्ड है, इसलिए नोटिस लगा, ये नोट निकली है। DHFL में ये हुआ था, DHFL में रेजोल्यूशन प्लान में साफ लिखा था, दिस शेयर इज गोइंग टू बिकम जीरो। हमने पोस्ट भी लिखा कि ये शेयर जीरो होने वाला है, आप इसको प्लीज ना लें। अपर सर्किट पे था 4 दिन, चौथे दिन अपर सर्किट के बाद न्यूज आया कि इसको जीरो होना है, कि ऑफिशियल इंटीमेशन। बिफोर दैट इट वाज अनऑफिशियल बट पीपल न्यू अबाउट इट, एंड आई रोट अ पोस्ट ऑल्सो। पीपल वर गिविंग मी गालीज कि तुमको क्या ही पता होगा, देखो अपर सर्किट पे होगा। मैं कहा भाई वो कह रहा है जीरो पे होने वाला है, मैं क्या बोलूँ? अगर शेयर अपर सर्किट पे, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप then and I was doing it as more of public service than I was for anything else, because I was like this is a little dangerous skill, because अगर ऐसी चीज़ें हमने नहीं रोकी एज अ मार्केट प्लेयर तो लोग मार्केट को ही ट्रस्ट करना बंद कर देंगे ना। सो हमने कहा कि देखो एटलीस्ट हम बता रहे हैं आपको। So we said this, and then yet people bought, and then it went to zero, and then people were like, हाँ zero है, चला गया ये वो। मैं कहा नहीं, ये लिखा था, it was written, and okay 34 रुपीज़ पे शायद आपका लॉस बहुत ज़्यादा था, पर लॉस 34 रुपये मिल तो रहे थे, आप बेच सकते थे, अपर सर्किट में था, आप कभी भी बेच सकते थे, पर वो फिर जीरो चला गया। Now I would say this phenomenon of people buying or digging into such stocks, many such stocks, and some of them may be great. Suzlon, for instance, has actually turned around. Yes Bank has turned around, but expecting that कि turn around का मतलब मेरा original price वापस मिल जाएगा, that may be a little. Yes Bank I think went to 4 rupees or something, maybe. I think so. Yeah. Maybe I don't know how much it went to. I mean it's all fine because every stock will have its lows now at some point. तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस एक टाइम पे was 1/100th the value of what it is today. Yeah. Effectively 60 रुपीज़ पे था, अभी 6,000 रुपये पे। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि बुरे वक्त से गया, तो ऑनेस्टली देयर वाज बुरा वक्त फॉर इट। इट वाज लेंडिंग प्राइमरली टू ऑटोज, बजाज 3-wheelers, वहाँ पे बहुत फाइट हुआ करता था रिपेमेंट का, उसके NPAs बहुत ज़्यादा थे। फ्रॉम देयर इट बिकेम दिस बेहेमथ जो आपको संडे शाम को भी फ़ोन करता है। तो What a transition. What a transition, right? And it is now valued at 6,900 crores, और कुछ भी हो जाए वो टेलीफोन कॉल आता रहेगा और लोग लोन लेते रहेंगे और पता नहीं जो भी है होता रहेगा। एंड दैट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज हाउ द स्टॉक हैज़ डन रियली वेल। अगर आप 60 रुपीज़ में खरीदते तो 4 रुपये में येस बैंक जिसने खरीदा होगा शायद वो 8 रुपये पर रह गया होगा, 10 रुपये पर रह गया होगा, 15 रुपये पर होगा, शायद 20 रुपये उसने बेच दिया होगा। यार मेरा 5 गुना आ गया। अब वो 30 रुपये को देख के कह रहा है कि भाई मैंने तो 4 रुपये का लिया हुआ था, मैंने क्यों बेचा 20 रुपये पे। अब प्रॉब्लम ये है कि यही होता है नेक्स्ट, कहता है यार मैं 30 रुपये पे और लूँगा, अब ये 60 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, क्योंकि कोई तो बोल रहा होगा कि देखो तुमने 20 पे बेच दिया, तुम क्या अपने आप को महाज्ञानी समझते थे, ये 20 से 30 हो गया, 20 से 30 तो 50% का रिटर्न है, विच इज़ वेरी गुड। Now that is where this problem of doubting yourself comes and overconfidence also comes, कि आपको पता नहीं था आपने 4 रुपये क्यों लिया, आपने तो ये क्या 4 रुपये यार अच्छा बैंक है ले लेते हैं, सस्ता है ले लेते हैं।
तो आपका 20 रुपये बन गया, आपको पता नहीं था कि 20 रुपये क्यों बना है, पर बन गया। आपने समझा कि देखो मैंने चीप लिया और मैं ही हूँ महाज्ञानी वॉटेवर। आप 20 रुपये बेच के आप समझते हो कि मैंने तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, अब नहीं जाएगा ऊपर, अब गया 30 रुपये। आपने फिर से अपने आप को, यार मतलब ये 20 से 30 कैसे हो गया और मैंने क्यों नहीं रिकग्नाइज किया इसको, तो आप वही स्टॉप लोगे। ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग, यू बाई द स्टॉक ऑन रिवेंज, कि मैं अब 30 से जब 40 जाएगा ना, 30 से 50 जाएगा तो मैं कमाऊंगा उसमें, देन आई विल बी ज्ञानी अगेन। सो दिस ईगो ना कि मैं ही हूँ टाइप्स, दैट इज अ बिग, ये यू ओनली लर्न व्हेन यू गेट बीटन ऑन द हेड विद द मार्केट। आई थिंक आपने कई जगह काफ़ी अच्छा बोला है, कंपाउंडिंग व्हेन ओनली हैपेंस व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट। Market goes up when you sleep. So we have written this in the book also. I had it in my office as a poster. The market makes money when you sleep. Sometimes you have to sleep through markets. You do not sleep through years. And that years, I'll tell you that this saying is not as valid कि market नीचे चला गया इसलिए आपको सुनना चाहिए। आपको इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि जब ऊपर जाता है आप समझते हो कि अब बेचना चाहिए। वो जो 60 रुपये का 6,000 रुपये हुआ, जिस आदमी ने 60 रुपये का खरीदा होगा, क्या वो 200 रुपये पे और खरीदेगा? बट खरीदना चाहिए था उसको। क्या 400 रुपये पे और खरीदेगा? फिर खरीदना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 6,000 है। आप देखो तो यू शुड लुक बैक एंड से व्हाई डिडंट आई बाय मोर। बट आप 400 रुपये पे आपके माइंड में यही होगा, मैं बेचूं क्या? अगर आप सो रहे होते ना, अभी जगते हैं, बोलते हैं कि यार हेलो 6,000 रुपये हुआ, वेरी गुड। MRF was 1,000 rupees one day, now it is 1,60,000 rupees. So somebody has made a lot of money in that time frame. But any time he had looked in the middle, he would have been like, इसको बेच देते हैं। I remember one of your stories where you said कि a 24-year-old came to you and उसने कहा कि मेरे पास 200 MRF के शेयर हैं जो मेरे दादाजी ने लिए थे। मेरे से नहीं, it was on TV. There was a segment on TV where he had come to the TV thing. दादाजी ने 200 रुपये, no, 200 शेयर है, which is worth 3.2 crores today. But he didn't know. I'm sure he knew, बस TV पे शो ऑफ भी करना चाहता, शायद, पता नहीं, जो भी है, क्योंकि MRF के शेयर का प्राइस तो दिख जाता है ना। लेकिन ये भी है कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि कितने वैल्यू है। फॉर इंस्टेंस somebody told me, यार माय फादर हैज सम रिलायंस शेयर्स फ्रॉम 1987 जो पेपर के शेयर हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी? मैंने कहा एक मिनट भाई, रिलायंस का उसके बाद पता नहीं कितना मर्जर दिस थिंग हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करो, पता नहीं, हो सकता है आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या कम हो, and you should get this checked with things. So now he has undertaken, it's been a while for him to understand कि हुआ क्या था, क्योंकि Reliance का I think there was a merger with some companies and then there was a demerger in 2005. There was a bunch of bonus issues. अभी फिलहाल में 2 years ago there was a bonus issue, demerger of Geo Finance. Earlier there was demerger of Reliance Capital वाला thing and Reliance Energy, Reliance RNRL कुछ था. Then all of these companies, by the time he gets and dissolves all this, it will take him a long time. But the fact that he had 10 shares that time probably means he has maybe 500 shares. I don't know, just saying. 500 shares of a company whose value is about 3,000 is 15 lakh rupees. But अगर वो कहता है मेरे पास 10 ही शेयर है और 30,000 का प्राइस दिखता है, यार सिर्फ 30,000 का वैल्यू, क्या फ़ायदा? You have to go and check कि एक्चुअली वैल्यू क्या है. It may be much more than you think, it may be much less than you think, or the way you, like MRF में तो साफ पता था बोनस कुछ हुआ नहीं है, तो 200 शेयर है, 200 इंटू शेयर प्राइस। अगर बाकी में अगर कोई आता मेरे पास, तो दैट आई थिंक वुड हैव बीन दिस थिंग। द थिंग इज, there was a very interesting thing कि when the best performing portfolios, somebody did some analysis of hundreds and hundreds of portfolios, and he said the best performing portfolios of those people who were dead. And people did not know who they were. They are the real Warren Buffett. Yes, because they died and the family didn't know. They got to know much later and then they cashed in. That is when people have made the most money. So strange, because हम सोचते हैं कि मार्केट रोज देखो, हम भी करते हैं ना, रोज देखते हैं, रोज एनालाइज करेंगे, बैंक में ये ऊपर जा रहा है, मैक्रो में ये टेंशन है, NBFC में रेगुलेशन है।
ये छोड़ो 5 साल बाद देखो, then you'll be like ये क्या बकवास कर रहा था, NBFC रेगुलेशन ये वो, पता नहीं बैंक तभी ले लेना चाहिए था, कुछ भी करो बीच में ऊपर नीचे हो गया, फिर भी मैं पैसे कमा ली. दिस इज द रियल मार्केट. हम बाकी सब जो चीज़ें करते हैं वो एंटरटेनमेंट है. The real market is you keep your mouth shut and you do your thing very silently. So a lot of my talking when I talk about the market is irrelevant. It is more, it should not even be taken into consideration even by me. So I have an investing me and I have a talking me. Yeah. Sometimes the two of them don't mix. जो बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपनी बातों को ध्यान में रख के एक्शन लेना चाहते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. बात करो ना यार, ट्विटर है, जितनी बातें करने करो, पर जब एक्शन लेते हो ध्यान से, एज एन इन्वेस्टर यू टेक योर एक्शन. समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड. When things have changed, you should take it. The things have changed in that IRCTC thing. When we sold to what it is now, of course, it has done a 1:5 bonus and all that stuff. The price is probably not much different, and maybe it has done 2x FD level returns. FD se thode zyada returns in comparison with what it was then. But maybe it was still a good hold from then to now. I can say that. But I just didn't. I knew that there were better opportunities, so I wanted to make those decisions on those things. But I also say that if you look at IRCTC stock every day and you look at the news every day, हर रोज आपको लगेगा यार आप कुछ बेच देना चाहिए या फिर आज कुछ और लेना चाहिए. I think that is where you have to become a better investor by, and I am also a victim of it because I also look at the news all the time. It's very difficult to not get, अरे Fed ने interest rate बढ़ा दिया, कुछ करना चाहिए. क्या ही करोगे, फेड ने इंटरेस्ट रेट कर, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इधर उधर, बट यू हैव टू फिगर आउट इफ दैट एक्चुअली हर्ट्स योर कंपनीज और नॉट. दैट इज द वर्क. नाउ जस्ट बिकॉज फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया यू शुड बी सेलिंग योर शेयर्स साउंड्स लाइक एन ईजी एक्शन टू टेक. फेड ने इंक्रीज किया, अब तो मार्केट की वाट लगने वाली है. दिस इज वेरी गोइंग टू प्रेडिक्टिव टेरिटरी. प्रेडिक्टिव टेरिटरी इज डेंजरस बिकॉज nobody could predict. 3 महीने पहले somebody came to me and said, is market overvalued? I said, I don't know. He said, why? I said, how do I know market is overvalued? As in, you're thinking market यहाँ से गिरेगा कि नहीं. You're not asking me whether market is overvalued. You're saying कि market यहाँ से गिरेगा कि नहीं. Answer to that is I don't know. It could be overvalued and still go up another 30%. It could be undervalued and fall another 40%. किसी को कुछ नहीं पता होता. And therefore you should respect the market. Respect कि जो है वो है. वहाँ से market is up 26% in 3 months roughly. I mean in our portfolios. So is it that we were right, the market was wrong, or whatever it was, and things like that? I don't think so. I think the answer is you can't predict. Even today, if you ask me this, I have unfortunately the same answer. हम तो broken record की तरह, हमें नहीं पता है. And saying I don't know is the most difficult thing for investors because you're supposed to know. Yeah. But I think I don't know should be a default answer. वो I don't know के बाद but जो होता है, because people give you money, they expect that you have all the answers. Yeah, that is true. Though we try to tell them कि देखो we don't have, and sometimes they will say कि नहीं, give our money back, we don't want. ये क्या मतलब, तुमको नहीं पता. And some other people are like, हाँ इसको नहीं पता है. But by and large, this guy gets his head together, and the team gets their head together and gets it right over a long period of time. And that is the only way you can invest in markets. I think it's the same for mutual funds. आप कहोगे यार ये मैंने म्यूचुअल फंड 3 साल पहले लिया था, अभी कुछ नहीं कर रहा है. And I'll be looking at you and say 3 साल क्या आपका पीरियड था अगर इन्वेस्टमेंट का? नहीं हो गया 3 साल. मैं कहा अच्छा ठीक है, if 3 साल was your thing, then take the action. If it was 5 years and 10 years, then why do you want to take action now? वो कर रहा है जो कर रहा है. Maybe it will take longer for him to evolve this. Business cycles in India last between 3 and 5 years. So you have to give at least a fund manager a business cycle to perform. Right? And market ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा. You want the guy to live through those cycles. Only then can he perform. अगर आप नहीं दोगे, then the fund manager gets कि हर साल perform करना है यार. I mean, at that level, you're trading, not investing. So, I mean, when I say that, I mean, you're doing things that are more short-term in nature for a business that is almost by definition long-term in nature. And that's why it's always, the safe advice is always buy large caps. That's again a very bad conclusion, I would say.
and I'm sorry about using that language, but there is no big shakes about large caps or small caps. Every large cap was at some point a small cap, and they've all come up from there. It's like saying कि दीपक शनॉय कुछ नहीं था, बस क्या है, क्या ही कर लेगा, and saying कि नहीं, अगर ये बड़े बैंक में काम नहीं करते तो मैं इससे क्यों पैसे दूँ. We have seen time and time again, it is the people from outside, people from small side who come and beat in the market. How is Zomato or Swiggy so big today in the restaurant market versus इतने सारे तो कंपनीज थे. टाटा ने नहीं बनाया अपना जोमेटो या स्विगी, ये तो अलग से बनाए. ये कौन थे? ये तो रेस्टोरेंट चलाते भी नहीं है, इनको पता भी नहीं खाना कैसे बनाना है. ये तो खाना डिलीवर करते हैं और खुद भी नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं. क्या है टेक्नोलॉजी वाले लोग. At some level we have to assume that changes will come, and this buying only of large caps sounds to me like a recipe for mediocre returns. Yes. Over the time, you have to take some risks, and large caps are not less risky than small caps. Rakesh Jhunjhunwala made his all wealth through one stock, Titan, right, which was a micro cap fan. At the time, I don't know about all wealth. A lot of things about Rakesh Jhunjhunwala are perhaps maybe because of the legendary nature of it. It's like saying that Warren Buffett has always held stocks for the long term. Yeah. No, his average holding period was 6 months or something like that. Because जो अपने positions नहीं workout होते थे काट देता अपना. But he used to make statement कि we should buy stocks only for the long term. तो आप ये समझते थे कि he used to buy stock only for the long term. That's the wrong assumption, because he's actually buying. So you should see what people do, not say. Rakesh himself was also a trader and an investor. He used to have short positions for the longest time. He was a person who used to love to go short on the market before, in the Harshad Mehta time and all that stuff. After that, he continued to retain his interest for the short side of the market, but he made a lot of bets on the long side of the market. So he made a lot of money. I think we make a legend out of his long positions, but I think his legendary thing was also cutting positions and going short. He was amazing in that. And we don't give him enough respect for it. Any examples of that? I can't say. I mean, there's not much of his public information, but there have been enough times when his positions, he could switch positions like this. He could say कि I'm long so much, इसको काटो, short जाओ. He would do this without any fear of कि ये लोग क्या सोचेंगे. You know, that kind of thing, I think we should respect that more. कि लोग अपने, and he's doing his own money. It's not our money, it's not public money that he's doing and all that stuff. He's doing his own money, and over a period of time, he has built this magnificent thing. I think that's a good thing. I don't think we should deny him that this thing. So, but to think कि अच्छा मुझे राकेश झुंझुनवाला जैसा सोचना चाहिए, तो राकेश झुंझुनवाला जैसे सोचो. आप ये नहीं सोचो कि मैं एक टाइटन खरीद के बैठूंगा. वो तो उसने बहुत सारा काम किया है. He has done a lot of work. He has gone short. He has made money in the short. He has done badla. He has done futures. He has done options. Maybe not options. I don't know about options, but I know that he used to have futures positions. I know that this is a more complex being than saying कि इसने Titan से पैसा बनाया. And I know that simplifying Rakesh Jhunjhunwala into one Titan is probably one of the mistakes of our generation. And we should perhaps not make those mistakes. We should learn from him in terms of the attitude should be of action. When you're a trader, you take the trader wala action. When you're an investor, you take the investor wala action. You will buy a Lupin, you will go and question management as an investor. But you will trade some index future, and you will trade index future without being mercilessly going short at some point, mercilessly going long also at another point. There is no, that is dhanda. So you're doing your job. And the even better thing for Rakesh was he refused to take other people's money. And very, very, it's like I supremely respect Zerodha for this. They did not take any VC money. They did not take third-party money. They built their business where it is. And if they were to go IPO today, man, they would be takers for it. But they don't want to go IPO also right now. But
I mean, at least they haven't stated an intention to go IPO, but one day I hope they will, and I hope we all get a chance to participate in that business. But he built this business without relying on external capital, and I must say I really respect them for it. I respect Rakesh for doing what he did, for having only one customer, which was his wife. And as much as I say this, I think very powerful people who did it versus a lot of others. I mean, it's not like they're worse off. I'm just saying that when you have to answer to other people, your behavior changes. Yes. I am managing other people's money. Yeah. If I buy a stock, the customer has the right to call up and ask, why are you buying it? मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप ये stock मेरे लिए मत लो. I can choose to say कि नहीं देखो मैं ले रहा हूँ, आपको नहीं लेना है तो आप अपने पैसे वापस ले लो. Or I can say चलो आपको एक काम करते हैं, आपके अकाउंट में नहीं लेते हैं in the sense of this thing, but that is not right because I am supposed to be making that decision. If not, I should actually be telling that. If I do all of these things, I'm still answerable. So कुछ स्टॉक्स में शायद नहीं लूंगा. लोग बोलेंगे यार दीपक तुमने तो टीवी बोला था ये स्टॉक अच्छा नहीं है, आपने क्यों ले लिया अभी? So I say, Lord, I reserve the right to change my mind. But sometimes because I have to say that, I'll say यार ये नहीं ले, मैंने बोल दिया था ना टीवी पे कि नहीं ले रहा हूँ ये स्टॉक, I don't like this stock, even though it has fallen 40% from there, and I should be buying. I mean, because maybe at some price, many companies are very attractive. अब गिरा दो एक तरह से, and then there is the fundamentally it's good, I might want to buy that stock, but then you have this aura कि मैं तो बोल दिया था. You can't contradict yourself. And that feeling, Rakesh was very good at that. He's like, I don't care. मैंने टीवी कुछ भी बोला होगा, मैं अपना पोजीशन तो खुल लूंगा. आपको पता ही नहीं चलेगा. Why do you care about what my position is? No, thank you so much, Deepak. It's been such an amazing conversation, and believe me, right? I've just 25% covered of it. We'll cover the remaining 75% next time. I can't see, but my God. Okay. Oof, you had, dude, this is like an essay. ऐसे तो मतलब we'll spend the rest of the year talking about this. But some of the rest I didn't want to answer only, but it's better that I don't. Okay. ठीक है, interesting. Good. All the best, man. Thank you so much. Very nice. Thank you. Thanks for having me. Thanks for having such a deep conversation. Good fun.